notice. Both the idea is to walk you through and share with you the current situation. I'm sure you must be following the developments in our region for the last few days since 22nd of April. We would be sharing, three of us. I'm joined by DG ISPR, Lieutenant General Ahmed Sharif, and my colleague, Mr. Shafqat Ali Khan, spokesperson and additional secretary for MOFA. We are obviously, as we speak, the entire region is facing a serious threat to its peace and stability owing to the politically motivated and highly provocative environment being created by India in the wake of Pahalgam attack in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The purpose of this interaction is to brief you about these developments and to share Pakistan's concerns at the highly irresponsible and destabilizing Indian actions and statements. We look forward to answering any questions after the briefing ends. Let me start by reiterating that Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations. No cause or objective can possibly justify taking lives of innocent people. This is the national policy, and this is the Islamic policy. Killing of a human being tantamount, as per Quran, killing of the entire humanity. And saving a life tantamounts to saving the entire humanity. So we believe in that. Let me say that targeting of innocent civilians is surely deplorable and condemnable. And this is happening in many parts of the world, and we have been subscribing our views and our policy everywhere it happens. We are concerned over the loss of lives during the Pahalgam attack. We also extended our condolences. Being a victim of terrorism itself, no one can feel the pain of those impacted by this scourge like Pakistan. Ladies and gentlemen, as the member of the UN Security Council, Pakistan constructively engaged with the other members on the press statement which is issued by the UN Security Council on the Pahalgam incident in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The UN Security Council statement contains condemnation in the strongest possible terms of the incident. On the other hand, it is India that glorifies and even celebrates its assassination campaign and sponsoring of terrorism in Pakistan and other countries. No other country has sacrificed as much as Pakistan, nor suffered so much due to terrorism. More than 80,000 lives have been sacrificed. Economic losses of about over $150 billion have been incurred. And in totality, the impact, the economic and the indirect losses add up to close to $500 billion. We have been working closely with the international community to address this common threat. Since 22nd of April, Foreign Office has been actively involved and in interacting with the international community. At least a dozen foreign ministers, deputy prime ministers, and the Prime Minister, I have been in touch and have discussed and explained the situation. And I'm sure you being from the media must be already up to date, because MOFA as a policy, after each interaction with any dignitary, we make a very brief statement as to that interaction. The countless sacrifices made by our valiant law enforcement agencies as well as common citizens have helped address the threat of terrorism and contributed towards regional and international peace and stability. In fact, Pakistan has been a victim of terrorism
that is planned, orchestrated, and sponsored by India. In this backdrop, it is preposterous to even suggest any kind of association of Pakistan with this incident. The hype that is created on each and every incident in India seems to be deliberate and choreographed. It is unfortunate that India continues to weaponize unsubstantiated accusations and allegations as part of its disinformation strategy for narrow political ends. This is not the first time that India has resorted to such tactics. They have done it before and they have resorted again to the same what they did in Pulwama incident and earlier ones. In fact, this has now become a very familiar template aimed at diverting attention from India's inability to suppress the inalienable right of the Kashmiris to self-determination, its security failures in illegally Indian-occupied Jammu and Kashmir, as well as its decades-long state terrorism and oppression. To distract the international community's attention from the horrors of what's happening in the Indian illegally held Kashmir, India deliberately raises tensions with Pakistan. A durable solution for India lies in focusing on its internal problems instead of raising fingers on other countries. India has been deploying the allegations of terrorism to achieve its strategic objective for long. India has a history of using the excuse of terrorism for introducing draconian laws to suppress the innocent Kashmiris in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and to defy the UN Security Council resolutions, bilateral agreements, and international law. A case in point being India's illegal and unilateral actions of 5th of August 2019 reminds us of the blatant violation of the relevant UN Security Council resolutions and the Fourth Geneva Convention, as well as India's own commitments. India needs to explain why such incidents usually coincide with high-profile visits. Please make no mistake, the root cause of instability and conflict in South Asia is the unresolved and long-festering Jammu and Kashmir dispute. India's illegal occupation of the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir in stark violation of the UN Security Council resolutions and grave violations of the human rights must remain a matter of grave concern for the international community. At the same time, all such incidents are used to whip up domestic political sentiment for narrow political gains. We remain extremely concerned at the very vitriolic, highly inflammatory, and blatantly Islamophobic narrative being directed against the Kashmiris and the Indian Muslims. Indian media and political leaders are directing a similar discourse against Pakistan. This highly irresponsible ploy for narrow objective gains is dragging the entire region towards extreme instability. India made allegations against Pakistan after the Pahalgam attack without an iota of evidence and with such dramatic speed. Pakistan has nothing to do with it, and we have said so right from the beginning, and I repeat, Pakistan has nothing to do with Pahalgam incident, period. We demand an independent and transparent probe by neutral investigators as announced by the Prime Minister of Pakistan, Muhammad Shahbaz Sharif. Any TORs in this regard should be credible and mutually agreed. Pakistan has neither any connection to it, as I explained, nor is the potential beneficiary. At a time when Pakistan economy is stabilizing and we are making significant progress against terrorism, we need to question
why this situation is being created by India all of a sudden, and what is the motivation behind it. The actions that India has announced after its Cabinet Committee on Security are illegal and highly irresponsible. Holding an abeyance of the Indus Water Treaty is unilateral and illegal. There are no such provisions in the treaty. It cannot be amended without consensus. It cannot be terminated without consensus. And in case of any disagreement or issues, there are forums provided in the treaty which would be invoked. This action shows India's blatant disregard for the sanctity of international treaties. It sets a dangerous precedent. It strikes at a fundamental pillar of the regional cooperation with profound implications for regional and global stability. Pakistan is an agrarian economy. Millions of people are dependent on the waters being regulated by this treaty. Please don't forget, we gave up three rivers in this treaty. And I hardly can find a water distribution treaty in the world whereby a part of dealing with the distribution of water, the rivers could have only also been given up. I can't find. The National Security Committee of Pakistan has made it very clear that any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of the low riparian will be considered as an act of war. It is equivalent to an attack on the people of Pakistan and its economy. Other diplomatic measures by India are indiscriminate and unnecessary. India's actions and inflammatory rhetoric in the last few days are highly irresponsible. Being a responsible member of the international community, Pakistan believes in restraint and remains committed to regional peace and stability. However, in case of any act of aggression, Pakistan remains determined to defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of its inherent right to self-defense as enshrined in Article 51 of the UN Charter. The world leaders I have been speaking to in the last few days after this incident, who have been requesting for the exercise of restraint, I have been making it very clear on behalf of our government, on behalf of the nation, Pakistan will not be the first one to resort to any escalatory move. However, in case of any escalatory move by the Indian side, we will respond very strongly. Let me raise some questions that need to be considered with respect to the Pahalgam incident. One, is it not the time for the international community to hold India accountable for its transnational assassinations in different countries, including Pakistan? Two, is it not important to distinguish between the international community's sympathy with victims of the incident and unwitting endorsement of Indian belligerence? Three, is it not that Indian propaganda is aimed at fabricating a casus belli for a military adventure? Four, don't you think that India's blatant disregard of international law and whimsical approach towards its obligations would lead to a highly unstable and unpredictable regional order? Five, isn't it high time for the international community to step in to condemn India and to prevent it from targeting people on the basis of Islamophobia and religious hatred? Six, can we deny that the dangerous Indian brinkmanship and efforts aimed at escalation can potentially lead to disastrous consequences in a nuclearized region and beyond? Notwithstanding above, Pakistan is cognizant
of the developing situation. We are very alert. The armed forces are alert, and the National Security Committee resolve is very much there. We are vigilant, our armed forces are vigilant, and the nation will thwart any misadventure, responding in a befitting and decisive manner at the time and place of our choosing. Let me also share with you that it took no time that we issued the statement expressing our condolences. I was with Prime Minister in Ankara on an official 36 hours visit. After we landed, the news came, and the moment the meetings for which we had gone there ended in the evening, I was in touch with the Foreign Office, and the Foreign Secretary and I and the team finalized in consultation with the stakeholders, Pakistan's statement on this incident, number one. Number two, a press statement was lodged by US in the UN Security Council, and we received that statement. And prima facie, there were two I'm not sure whether they were intentional or there were two important things which were missing there. One was missing, one was additional. The Pahalgam did not have in which part of the world, so we insisted Jammu and Kashmir to be added. Number two, there was a reference to the resistance forum, and there was a condemnation of that forum. We were happy to do that, but we asked, can we have any evidence? Or even if they have self-claimed that they have done this, we'll be very happy. So obviously, we, on principles, all other 14 members agreed to our objections, amended the press statement, which has strongest condemnation with respect to the terrorist attack in Pahalgam. So don't tell me that Pakistan is not condemned. There are different forums of condemnation. Pakistan has condemned at the International Forum, where it is a responsible, one of the 15 members of the UN Security Council. Pakistan highest security forum, which is National Security Committee, has condemned it. We've condemned terrorism in all its manifestation, all forms and manifestations. Prime Minister has given a very clear condemnation statement when he offered the independent inquiry, impartial, transparent inquiry by independent, actors. So this is something rhetoric which the other side has been playing, that we did not condemn, we didn't do this. That is all wrong. So this is a brief detail I have shared with you, my opening statement. My colleagues sitting with me, spokesperson will walk you through with more detailed specific facts, and then, where necessary, Lieutenant General Sharif would step in to augment the facts. So over to you, Shafqat sir. Thank you. Thank you very much, sir. We have the Deputy Prime Minister and Foreign Minister has provided a detailed policy statement which outlines very clearly the main contours of Pakistan's policy on this development and what is happening in our region. We have a bit more detailed information to share with our colleagues and friends here. And this is basically an attempt to further build on what the Deputy Prime Minister has already articulated. And essentially, it is an effort to clear the fog of confusion and also to remove the miasma of disinformation, basically, and to clearly lay out Pakistan's perspective. So the sequence we are following is basically just to give you an outline of how our detailed presentation would flow. So first we will speak a few words about the Pahalgam incident, some details about geography, what happened. The second is the question of the larger problems which we have been witnessing, which is very evident, is the fake encounters and illegally held Pakistani prisoners in India.
The third and very crucial, very important, it feeds into this whole picture, is the Indian-sponsored and abetted terrorism in Pakistan. This we will explain in some detail how it is happening and what are the mechanics and what are the implications of this. And finally, the last two sections deal with the internal repression in India and stifling of freedom of expression, basically. So the first part I'll start is the Pahalgam incident. Can we slide? Yeah, okay. So you have a good view of it. The incident occurred in Pahalgam, which is about 230 kilometers from the line of control, or 100 kilometers the crow flight distance. And it's a known tourist area. And it's very clear if you look at this map which has been on display here. The area is hilly and slightly treacherous in nature. An important detail now, this please keep in mind. The attack took place between 1350 to 1420 hours. This is the time window when this attack is taking place. But the FIR was registered at 1430 hours, within 10 minutes. Unfortunately, there were 26 people died. There was, including one Nepali national, and 16 people were injured. Indian security forces reached the site and launched a search operation, but 8 days have passed. So far, there is no news of any arrest, suspects information being shared about suspects or evidence being shared. But it is also even more interesting is that, first of all, in 10 minutes, FIR was registered, but with equal alacrity, the Indian social media accounts, they all follow a certain pattern. They are affiliated with the Indian External Intelligence Agency. We will give more detail about that. And they, in 10 minutes time, I think the attack lasted till 1420 hours. Within short span of time, immediately Pakistan was started being blamed, although there was no evidence, nothing, no detailed information, but this being was pinned on Pakistan very, very quickly. And this is something very interesting to reflect on. The next, no, it's a pichli slide pe jaye. The slide before this. Yes. The other point is also you have to keep in view that when we are talking about 10-minute difference between the writing of FIR and the incident, it is a hilly track. Its minimum time is 30 minutes you need to get to the police station. This is very important to keep in view. So, but again, just to repeat myself, sounding repetitive, but the FIR is registered in a matter of 10 minutes. The timing raises serious questions about how information was processed so quickly. And writing of FIR is that it needs certain deliberation. Maybe someone called, but the point is you need to gather, this is the first information report, you have to have some contours of what happened actually before you get into the writing of the FIR. And that too in such difficult terrain, how all of this was done, basically. From this onward, now come to the next slide. I will now request the Director General ISPR, Lieutenant General Sharif, to take over this, the other part of the presentation. He'll share more details on this. Thank you, sir. Thank you very much. As the spokesperson has already given you an orientation of the area. So if you see the first slide, if you can go to the first slide, I'll just tilt a bit so that I'll be able to go along with you. If you can go to the map slide. If you see, this is the if this is the crow distance from the Badori Bulge at the place, it is approximately 100 kilometers. And on the road and tracks, it is more than 200 kilometers. But that is from the tip of the Badori Bulge. From any nearest Pakistani town, let's say it's Bagh, it's even much more. So what we are trying to do here is to walk you through facts of this incident rather than the allegations that are being made. So if the allegation is that it's the Pakistan-based so-called terrorists did this incident, then you need to be cognizant of where it lies, how far deep it is inside the
illegally occupied Jammu and Kashmir. If you see the terrain on this map slide, you will see that it's quite hilly. It's not the sort of terrain which is very friendly, and not a sort of terrain where the all-weather fair roads exist. It's mostly on 4x4 and the horseback that the travel is being done over there. If you go to the next slide, so there's a track, then comes the road. So approximately, if you see, it takes about, we can estimate that about 30 minutes for someone to move from the incident site to the police station. So if the incident, as per the FIR, was from 1350 and it is 1420 hours, so how it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. And if we see this FIR closely, there are 3 points. The time factor, the time aspect has been, I think, repeatedly, clearly enunciated. There are 2 more things that I would like to draw your attention. That the FIR lodged after 10 minutes state that these were across the border. The handlers of this incident were across the border. So they established it in 10 minutes. While the incident was going on, before that, the intelligence or the security was so, we can say, flat that the incident happened, there was no intelligence, but within 10 minutes, they had such complete intelligence that they were established that it was across the border handlers. And secondly, it says over there that there was indiscriminate firing. However, we also know that a consistent narrative was made, is being made, that this act of terrorism was done on base of religion. That the Muslims, that it was the segregation was done and Hindus were killed. So I would request if you can go to the next slide. Now, if you please see this clip which has been made at the time of incident. Please run it. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. You can see that the firing and whatever happening is not, there is no discrimination or segregation being done. Are the people being segregated, identified on the basis of religion? You can see in the background while this video is being made, right at the time of incident. Because this is that incident on the basis of which the segregation on the basis of religion has been claimed. So, because facts speak for themselves. On the next clip, he is the brother of the Muslim victim of this act of that happened of the killing of the innocent citizens over there. Listen to him. जो मैं सुन रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम ये सब गलत है, क्योंकि मेरा भाई जो है जीती जागती मिसाल है उसका. ये जो बोल रहे हैं कि खाली हिंदू को टारगेट किया गया है, उसमें मेरा भाई भी है, वो मुस्लिम है. ये गलत बात है, इन्होंने मतलब गलत चीज फैलाई है. So why this self-made narrative is being made? That is a question that has already been raised by the Honorable Deputy Prime Minister. If you go to the next slide, you see that immediately after incident at about 3 o'clock, the social media, the particular social media handlers in India started breaking the news at 3:05, exactly at 3:05 on the social media, a handle which is closely affiliated with their agencies,
put the blame on Pakistan. It says Pakistan attacked Pahalgam through its proxies. Then the electronic media also comes into play. At 3:30, the electronic media is also saying that it's the Pakistan that is being done. You can listen to this. There are reports coming in of 4 tourists who have been targeted. They've been attacked by the terrorists in Pahalgam. Well, telltale signs of Pakistan's involvement is now emerging behind the Pahalgam terror attack. So this confirmation is clear now that there were Pakistani terrorists. Pakistan is not willing to digest that so much improvement has taken place in Jammu and Kashmir. So Pakistan is going to keep making such attempts. So the allegations of Pakistan being responsible started coming within minutes while the evidence is still awaited. And on the next, this social media post, which is at around 4 o'clock, you can see, if you go to the previous slide, if you see at 4 o'clock, they were sure and they started saying that it is the Islamist terrorists that have killed tourists. So the narrative of the Islamist terrorists, while we are absolutely clear that terrorism has no religion. There are no Islamic terrorists, there are no Christian terrorists, and there are also no even Hindu terrorists, because terrorists have no religion. If you go to the next slide, I'll draw your attention towards that these social media accounts that started propagating that it's Pakistan, it's Islamic terrorism, they have been in play in this business of terrorism much before. Here you can see that Mianwali 4th November, once the attack occurred. So you see at one day before, the same social media accounts that are active in Pahalgam, the Indian social media accounts affiliated with their agency, one day before, that social media account is saying, tomorrow is a big day, so going to bed early. You can see that. And next day, it says, it quote tweets and says, good morning Mianwali. And there we see the Mianwali terror incident being done by the Fitna al-Khawarij. So this is a collusion with the Fitna al-Khawarij, with the terror incident that happened in Mianwali on 4th of November 2023. Then comes 6th October 2024, the attack on our Chinese friends in Karachi. Before the attack, there is, from the same handle, there is a tweet which says big day in the next few hours. And then it says huge blast in Karachi, more details to follow. And then the targeted ID explosion in Karachi near airport, car carrying engineer foreigner, perhaps Chinese. So there you see the collusion for the world to see that how the choreography is being done of predicting that we are going to hit, where, when the attack happens, and then its glorification on social media. And if you follow the media, then the electronic media automatically comes within minutes into play. And same thing you are seeing in Pahalgam. Why I'm making this point? Because if you do this forensic, this common sense forensic, you see that what happened also in Pahalgam. Moving forward, very recently the Jafar Express, same account. Keep your eyes on Pakistan today and tomorrow. And then comes big Jafar Express train carrying Pakistani forces personnel from Quetta to Peshawar attack. The same accounts that are active carrying the narrative of the Islamist terrorists, Pakistan being responsible, on play over here. But let's see, if we want to understand what happened at Pahalgam, that what are the people there in India and Kashmir saying. Let's see what they are saying, who are actually over there.
10 लाख से ज्यादा यहाँ पर आर्मी है। अगर यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना, उसको रात में ही उठा लेंगे। अगर कोई पोस्ट गलत करेगा कोई, अगर यहाँ पर इतना फौज है, वो क्या कर रहे हैं? वो जख मार रहे हैं। वहाँ पर 200 बंदे थे, तब वहाँ पर क्यों नहीं आर्मी थी? क्यों नहीं थी? वो कहाँ गई? पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी, 27 लोगों की जान गई, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेलियर नहीं है, ये सरकार का फेलियर नहीं है। ये प्लान करके मत करो। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, हमें कुछ पता ही नहीं है। नीचे पूरे आर्मी का देश है, उन्हें पता ही नहीं है। चक्के नाकों पर आप हर जगह आपको मिलिट्री दिखेगी, पुलिस दिखेगी, सीआरपीएफ दिखेगी। किस लिए? बॉर्डर पे हैं तो कहां से आए? जहां तक पहुंचे हैं तो वापस कहां गए? जिस तरीके से किया गया रिटेलिएशन नहीं हो सकता है। अगर 7 लाख से 12 लाख के आसपास यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस है, उसके बावजूद उनको ये पता नहीं इंटेलिजेंस फेलियर। 3 टायर सिक्योरिटी रहते हुए भी एक ऐसा लैप्स हुआ, और ये सिक्योरिटी लैप्स है। What happened to our intelligence? Have we failed somewhere? And if we have, why have we failed? इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी है जमा कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी है, वो कहाँ है? वहाँ पे गाड़ी नहीं जा रही है, पैदल इंसान जा रहा है। सिक्योरिटी इतनी है कि वहाँ से टेररिस्ट कहाँ से आ गए? वहाँ कहीं ना कहीं इनकी एजेंसी अटैक करवाती है। The questions that the Honorable Deputy Prime Minister has raised, they are being echoed also within from India, because the facts are there for the people to see. Hear them out. ये पुलवामा 2 है। पुलवामा 1 में कोई उत्तर नहीं मिला देशवासियों को। ये सही है, प्रयोग है। पूरी देश की जनता, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी देश की जनता, देखिए काफी लोगों को ये नहीं पता है कि पहलगाम कहाँ है, चंदनवाड़ी कहाँ है, विष्णु टॉप कहाँ है, गणेश टॉप कहाँ है, शेषनाग कहाँ है, अमरनाथ क्या? आज 3 दिन हो गए हैं, अभी तक एक भी इस्तीफा क्यों नहीं आया, या कोई भी किसी ने भी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लिया? आप क्या सरकार और क्या डिफेंस और क्या आप होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं? आपसे अभी तक वो आतंकवादी पकड़े तक नहीं गए। बेवकूफ नहीं है हम लोगों को सब समझ आता है। कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गए। ये एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? जो तो आपके बीच में यही घूम रहे हो, या कोई कश्मीर के लोग अपने यहाँ पे घटना करके आबाद होंगे? This is the sister of the naval officer killed in that incident. That for 1.5 hours he kept on bleeding. So they could file, they can do the evaluation within 10 minutes that what happened, and they had filed an FIR against Pakistan. Within minutes, their social media is saying, and their officer is bleeding for 1.5 hours. इसका मतलब ये चुप नहीं है, ये किसी आने वाली चीज की आहट होने वाली है। जैसे एक साइलेंस होता है ना कुछ होने से पहले, कश्मीर भी उसी ट्रिगर पर है। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं, और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर चुके हैं। देश के गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा क्यों नहीं लिखा, और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत पड़ गई? जम्मू कश्मीर के पहलगाम के निकट मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले वेस्टर्न घाटी में आतंकी हमला हुआ। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की पंक्तियां हैं, सरहद पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। So these questions that we are raising, that we are thinking, that the world is thinking, the most loud voice in fact is coming inside from India. The people who are seeing and watching what's happening. Now if you go to the next slide, is it first time that it's happening? No. There is a litany of using terror incidents for political ends. This is important, that these terror incidents have an objective, a political objective. We saw last time in case of Pulwama that how the terror incident in February was used for a political objective for change of status of Kashmir. And we are seeing now
that a terror incident, an incident that happened in Pahalgam, is being used for the purpose of Indus Water Treaty, for distracting the Pakistan's continuous and very hardly fought and won war on the terrorism, the city effort of Pakistan, and the efforts, the successful efforts for reviving the economy. And there is a list of these incidents. I'll just give you examples of 2 incidents. If you go on the next slide, so the history speaks for itself, that what happened in the Chatti Singhpura 2000, exactly 25 years ago. Captain Tusk, they were misused. रात ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚ ਆਉਣਾ ਰਫੜਾ ਟੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਕੋਲ ਲੱਪੇ CID ਪੂਰੀ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕੌਣ ਚੌਂਦ ਮੇਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਿਆ and then they one night they came ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ चेकिंग के लिए निकलाओ बाहर आओ सारे आओ मेल सारे बाहर आ जाओ वो लाइन अप कर लेते थे पहले उदा ही करते रहे फ्रेंडली लाइन अप उन्होंने कॉन्फिडेंस देता फिर फैसला किया फिर अद्धी दिन आ गए 10 बजे रात निकलो बाहर गुरुद्वारे को लाइन अप करे ताकि बच जाओ पिंड छड़ के तो कोई आर्मी वालों को एक्शन नहीं आएगी तो कोई वी गेव द फुल रिपोर्ट. We said army was involved. Clinton kicked up out. And due to me, all lives have been lost. I want to know exactly what happened. The other human rights organization, United Nations, sent. And we sent them the report. क्या हुआ? They knew. Americans knew. तो उस killing के पीछे political reasons भी थी? No. Only this. That exposed the BJP government and BJP government wanted to tell Clinton J&K की हो रहा पाकिस्तान के बटला प्रोपेगेंडा करना सी ये देखो पाकिस्तान की कर रहे हैं पाकिस्तानी साढ़े सिख लाइन अप करके मारते हैं so basically BJP planted this to impress Clinton to help India against Pakistan तुझे मान नहीं सकते वो तो बाद जब ये रौला पे फिर अडवाणी ने फिर ऑर्डर दिया कि देखो जल्दी से कुछ करो जिससे कन्विंस हो जाए भी इन्होंने किया था ये वो पकड़ लो किसी को इन्होंने 5 इनोसेंट बंदे कश्मीरी बाढ़ के ऊपर जाके मारते जी they were innocent boys. Are you listening? After a quarter of a century, it's the same playbook being repeated again and again, using incidents like Pahalgam, like Chatti Singhpura, like Pulwama for political objectives. If you see, the history also tells us what was actually Pulwama. Please listen carefully to the then governor of the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे ये करेंगे वो करेंगे उसको इलेक्शन के लिए यूज करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे कि अब ये सारा ऑनर्स पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन एग्जैक्टली Blame Pakistan to win, to take credit, win elections. Now, there is another important fact that needs to be considered in the situation that the region is facing today, and that is the phenomenon of the fake encounters using the illegally held Pakistani prisoners in India. We have the reports, we have the information that hundreds of Pakistanis being held by the Indians in different jails and locations are used and fake encounters projected as terrorists and infiltrators. I'll give you just few examples. This boy, Zia Mustafa, he was a minor in October 2013. He was taken in custody.
while he inadvertently crossed, shot down in a fake encounter on 14th October 2021. Listen to this story as told by his family. ये जो इंडिया वाले हैं, मैं कहती हूँ इनको तो इनके सीनों में दिल है ही नहीं ना। इनके सीनों में अगर दिल होता ना तो ये कुछ ना करते। इतना अरसा उन्होंने कैद में रख के तो आखिर में जब उनका फैसला होना था तो उन्होंने उनको इनकाउंटर कर दिया और इन्होंने हमें उनकी ना डेड बॉडी दी। पाला भी था, वो मेरे घर में भी नीचे आता था, मामी मामी करता था, इधर ही बाहर ही खेलता था। माँ ने बहुत मुश्किल दिन गुजारे, उनकी आंख नजर भी चली गई थी रो रो के। तो बस जब कोई इधर कोई आता था उनको मिलने के लिए कहते ज़िया मुस्तफ़ा की कोई खबर है, नहीं है। हम यही कहते थे कि वो आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। कहती थी कि मैं देख के मर जाऊं तो फिर कोई अफसोस नहीं है। मेरी वालिदा मोहतरमा उसके इंतज़ार में वो वफात पा गई और इसी तरह से हमारे बड़े भाई, 2 बड़े भाई फौत हुए उसके इंतज़ार में। हमारा वो प्यारा बच्चा वो इस तरह से मार दिया, जेल से बाहर निकाल के ऐसे फर्जी नाम दे के कि उसको पता नहीं कौन सी जंगलात का पता था, उसको क्या पता था। जालिमो तुम्हारे वो जेल में है, जेल से कैसे कोई बंदा राब्ता कर सकता है। I will now give you 2 very recent examples post Pahalgam incident. If you see this slide, there you can see 2 unfortunate Kashmiri. One is Muhammad Farooq and Muhammad Deen. They are both elderly. They were both elderly 50 years ago, 50 years plus. Just few days ago on 24th April, they are residents of Uri, and they were killed in a fake encounter by the Indians. If you see the dead bodies, that the Indians showed that they are infiltrators. The Muhammad Farooq, he is wearing joggers. His clothes are absolutely clean. And what they have put beside, after killing him, beside him is a pistol. Is this the infiltrator where there is infested with regular forces going to take on a regular army, and those security forces wearing joggers and a pistol that they planted along with his body? On the other side, look at the shoes. He's wearing Mukeshan, shining shoes. You kill innocent, you plant evidence on them, and then you call them infiltrators? And what are these village people telling? That are they terrorists? Are they infiltrators? Listen to them. हमारा यहाँ आसानियाँ हो गया है। ये 2 हमारे भाई ये सदियों से जा रहे हैं, इनका बाप है वो यहाँ का रहने वाला है। जो LOC के करीब ये गाँव है, कहीं मालूम बेशी गुम हो जाता है। LOC के करीब उनको ढूंढने के लिए ये इंडिया आर्मी ने शहीद कर दिए। वो मार कर कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, दहशतगर्द ये नहीं है। हमारे 2 भाई इंडियन आर्मी ने इनको शहीद कर दिया है। वो गाँव के ज़ईफ़ उम्र थे, उनकी 50-60 साल उम्र थी, और उन्होंने रिपोर्ट में डाल दिया कि ये पाकिस्तान के दहशतगर्द थे। दहशतगर्द नहीं थे, वो ज़ईफ़ उम्र थे। एक का नाम मलिक फारूक और दूसरे का नाम दर। ये कोई दहशतगर्दी में नहीं पाए जाते हैं कि अरसा दराज से यहाँ रहते हैं। इंडियन आर्मी ने फायर करके उनको हलाक कर दिया। मेरे 2 भाई अपना माल मवेशी ढूंढने के लिए LOC लाइन के करीब गए तो इंडियन आर्मी वालों ने फायर करके दोनों को शहीद कर दिया। This is what they are trying to fabricate even after post Pahalgam, that the Pakistan is sending infiltrators and terrorists. You kill innocent people yourself. You plant weapons and then you claim them as infiltrators. You claim them that the Pakistani security forces have sent them. Ask yourself that who is doing state-sponsored terrorism over here. Next example. This is 23rd April, just few days ago, a fake encounter that happened in Kupwara. Please hold your breath and see what they do once they are planting, once they are making their bodies, how they mutilate those bodies. Listen to this. These are
soldiers of a professional army, hacking the head of a body of an innocent person and showing that these are the terrorists. This happened on 23rd of April in Kupwara. And that's why, if you go to the next slide, once you keep on seeing on the Indian media and their so-called evidence that this person has been found and this person has been found, from where are these persons coming? These are these Pakistani citizens, the Kashmiri citizens, who are held in different jails, in different locations. Like that poor boy Zia Mustafa and many other incidents that are on record, who are brought out of the jails, killed in fake encounters, tortured, forced to give confessional statements, posed as terrorists. This is the facts, this is the reality of what's going on behind all these incidents. Next, I would like to say few words and take a few minutes on the state-sponsored, the Indian-sponsored and abetted terrorism in Pakistan. Let's start with what the Indians themselves say about it. Please listen. बलूचिस्तान के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, उसका आदर करते हैं, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का है. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. प्रधानमंत्री जी का लाल किले से बयान अपने आप में पहला है और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बयान को सुनकर. इस फोन में बुक्ति, मरी, मंगल, कौन से सरदार का नंबर चाहिए मुझे बोलो, मैं दूंगा बलोचिस्तान में. अगर हम पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं, फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी टॉकिंग, हमें वो करना चाहिए. उन्होंने बलूची को दबा के और गुलाम बना के रखे, तो उनको मुक्त करना है. The aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities. Yadav, all of you are familiar with this Indian serving officer. And any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. बैरून मुमालिक के फंड्स लेकर अपनी ऐश वशरत की जिंदगी गुजार रहे थे, आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं. इस तमाम साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है. मेरा मुलाकात हमसाया मुल्क के इंटेलिजेंस वालों से हुआ. हम आपको सपोर्ट करेंगे रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम होने के लिए. एक महसूस करते हैं बलोच को सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, या मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान सिर्फ बलोच कौम का हो रहा है. दुनिया की नजरें तो हैं इस पे, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता. So these were the leaders of multiple terrorist groups operating in Balochistan, who, having after surrendered, are revealing in detail that how they were funded, they were helped, and how their sponsorship was done by India. In the next slide, you can see a terrorist operating and sponsored by India, Aslam Achu, in Indian hospital, and an Indian provided passport of Afghanistan office. In next slide, you can see that once the Jafar Express happened, the internationally recognized terrorist organization BLA, his spokesperson, where was he sitting? He was sitting on Indian channels, wearing a mask, coming on multiple Indian channels, and glorification of a terrorist sect, which, by the way, the state of India has not shown any concern or condemned so far. And they are glorifying it, taking its spokesperson over here. जैसे कि बहुत बड़े पैमाने का एक ऑपरेशन है, सैकड़ों यरगमाली है, फिर उसमें फौजी भी है, बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड इसको लीड कर रही है, उसके जो खसूसी दस्ते हैं स्पेशल. This is again very interesting. This footage that the Indian TV
channels showed was made by the terrorists once actually the Jafar Express ID was blown. So this was only available with terrorists. And who are the first electronic channels who started showing it? It's the Indian channels. See it. The attack took place at around 1 p.m. when the train passed through the Bolan Pass. Big news coming in from Pakistan. Baloch Army say that more than 100 Pakistani Army personnel have been taken hostage. It's a big claim being made by the BLA. 6 soldiers of the Pakistan Army have been neutralized. Artificial intelligence images being created. Pakistani train was hit by old images which are not related to the incident being used to show that terror incident has been. So this is vehement, clear glorification of terrorism being done in Pakistan. If you move to the next slide, you will find that not long ago it was Pakistan, as repeatedly has been telling this, and this is the evidence that Pakistan put in front in this room on Indian sponsored and abetted terrorism in Pakistan once the transnational killings of Pakistanis was done. Listen to this clip also. We have credible evidence of the links between Indian agents and the assassination of 2 Pakistani nationals on Pakistani soil. These are killings for hire cases. Indian agents use technology and safe havens on foreign soil to commit assassinations in Pakistan. An Indian agent, Yogesh Kumar, orchestrated the assassination. We have documentary, financial and forensic evidence of the involvement of the 2 Indian agents who masterminded these assassinations. And is it only restricted to Pakistan? No, it's not. It's transnational. Listen to what the other parts and the leaders of the other countries are saying. Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. This is something we take very seriously. A number of us have raised this directly with the Indian government. If the BJP administration is actively plotting to kill political opponents in the US and Canada, just imagine what's happening in India itself. So once we say that we have got nothing to do with Pahalgam, and once we say the only way out is an independent, credible, transparent investigation, we have strong reasons, empirical evidence and facts on the basis of which we are seeing. Now, see, if you come to the next slide, if you remember that once the National Security Council issued its declaration on 24th April, it clearly said that Indian attempts to inject volatility in the environment along Pakistan's eastern border is aimed at distracting Pakistan's counter-terrorism efforts. And on night 25th, 26th, within 48 to 72 hours, its manifestation was clear. The largest tashkeel of Fitna al-Khawarij terrorists was taken down. 71 were sent to hell. This proxy of the Indians, the largest tashkeel, was launched, and alhamdulillah, the Pakistan security forces and the intelligence agencies, being vigilant, took them down. Because we have credible intelligence that Indians, post-Pahalgam, have tasked all their proxies to undertake terrorist acts everywhere in Pakistan. Whether these proxies are operating in Balochistan and along the other parts of Pakistan. One of the clear evidence of these proxies and these cells I presented in detail yesterday. Just to refresh your minds,
I am going to request you to listen to just one audio of a serving major of the Indian Army talking with a terrorist who he is handling inside Pakistan. Please listen to this. आपकी बात आप एकदम दुरुस्त बात बोल रहे हैं, बट बच्चे तो हम लोग भी नहीं है जी, और पहला काम हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना? ठीक। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है ना? तो मैं अगर पैसा आपको भेज रहा हूँ, इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आप कभी डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेंगे, पहली चीज। ये आपके लिए भी क्या कहते हैं, मैं एक डायरेक्शन डेटिंग लेंगे। 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कि कितने अमाउंट को डालने से ISI या आपके यहाँ की एजेंसी या आपकी साइबर विंग हो गई, ठीक है ना, या आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गई आपकी, वो उस चीज को मद्देनजर नहीं लेगी। समझ गया, ठीक है ना? जब आप बड़ा ऑपरेशन करेंगे, और मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, जब आपको 3-4 लाख रुपए भेजे जाएंगे यहाँ से, तो आप लड़कों में क्या होता है, एक ऑपरेशन करने के बाद वो पागल हो जाते हैं। आपके मैं आप इस तरफ की बात कर रहा हूँ। उनको लगता है कि सामने वाला बंदा पैसा देने के मूड में नहीं है। जी नहीं, सामने वाला बंदा पैसा देगा, बट आपको वो टुकड़े टुकड़े में करके देगा। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं भी कमीशन देता हूँ किसी बंदे को देने के लिए, जो वहां पे बैठा हुआ है, जो अपनी रिस्क पे लिए आपको भेज रहा है पैसा, उसको भी तो मैं दूंगा ना भाई। मेरा क्लाइंट तो है नहीं वो, या घर वाला तो मेरा है नहीं, वो भी मेरा दोस्त ही है, तो मेरा ताना तो मैं दूंगा ही दूंगा ना भाई। उसकी भी तो लेबर लग रही है। अगर मेरे को सेफ रखना है तो मेरे लिए आसानी है कि मैं एक बारी में दे दूं, मेरा काम, मेरे पैसे बच जाएंगे। बट मैं आप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको 2, 3, 4 हिस्सों में बांट करके आपको देता हूँ। अकाउंट में नहीं, अलग अलग अकाउंट के अंदर। हम फ्यूचर में भी जब आप ऑपरेशन देंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो इस तरीके से जब चलेंगे आप पेशेंटली, तो हम लंबा चलेंगे। देखिए, मैं 1-2 दिन के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आने वाले काफी सालों के लिए यहाँ पे हूँ। एक ही ऑपरेशन के साथ आपका मेरा साथ और काम खत्म हो जाएगा। काम ऐसा करें कि आप भी बोले कि हाँ, अभी किसी बंदे। So what all we are showing you here, that independent, transparent, neutral, credible investigators, if they see this, this is what they need to see. This all is verifiable. This all is there for to see. It can be forensically checked that there is this serving Indian major. And this is few days ago. And if you listen carefully, what is he saying? He is saying we are operating a terror network from Lahore to Balochistan. He is saying we are here for years and we are going to be here for years. He is saying money is no problem. If this small terror cell, that one man cell, he is offering him millions and giving him millions. Just imagine how many billions are they ready and are they paying to Fitna al-Khawarij and the terrorist organizations operating in Balochistan as their proxy. Just imagine that how much money is being paid over there. And is it not a clear, vivid example of what actually terror financing means? This is for the world to see. This is for the world to check. Against all this terrorism that is sponsored and abetted by the Indians in Pakistan, because of it, if you go to the next slide, you will see the figures. Since January 24, Pakistan has suffered 3,700 terror incidents. And you talk to us about your incidents that are happening without any evidence, and you put those incidents blame on Pakistan. There is verifiable evidence that there are 3,700 incidents of terror that are happening over here. We have shown you a few parts of that how is it happening, who is sponsoring them, who is glorifying them, who is abetting them. In these incidents, the people of Pakistan has suffered 3,896 casualties. There are 1,314 shaheeds, civilians, law enforcement.
there are 2,582 injured. And against this, your law enforcement, your security forces, intelligence, armed forces are waging 192 operations per day. We have killed more 1,666 terrorists. This is the terrorism that has been abetted and sponsored by India. It's for the whole world to see, to feel it, its effects. And here we must be cognizant that Pakistan is the last bulwark that is standing against this scourge of terrorism, of this creeping, perverted ideology, which is getting its notion of victory somewhere else. And it's the Pakistan, the people of Pakistan, its armed forces, its law enforcement, which is standing as the last bulwark, not only for the sake of Pakistan and its people, but for the sake of the whole global community. Just imagine if this creeping, perverted ideology takes its root in a country of 240 million plus, what sort of disaster consequences it will have for the whole world. And India, for its short-term, myopic objectives, is facilitating this terrorism. It's abetting this perverted, creeping ideology. Why? For its short-term political objectives. So this is important to understand. Now, a few words about the oppression that is going on with the Muslims and in Kashmiris. We're not going to talk about what's been happening for last more than 70 years. I'm just going to show you what's happening since Pahalgam. Please watch this. That how the houses, please run this. That how the houses are being bulldozed, blasted. There are more than 50 houses in Kashmir alone have been bulldozed and blasted on flimsy charges of being affiliated or being part of the Pahalgam. More than 2,000 people have been taken into custody. Thousands are being harassed. This is what's happening right now. नायब वज़ीर आज़म इशाक़ डार और DG ISPR मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DG ISPR का कहना था कि पहलगाम वाक़या लाइन ऑफ कंट्रोल से 230 किलोमीटर दूर हुआ। हम पहलगाम वाक़ये के हक़ाइक़ पर जाएंगे। जाए वक़ुआ से पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए कम से कम 30 मिनट का सफ़र है। 10 मिनट में कैसे मुमकिन है कि कोई FIR दर्ज करवा दे? 10 मिनट में दर्ज FIR में हैंडलर जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। Planned and choreographed campaign of Islamist terrorism, but the facts speak differently. This is what some sane people are saying, that the tourists who came in taxis belonging to Muslims, they stayed in hotels owned by Muslims, they ate food cooked by Muslims, they rode ponies owned by Muslims, they did trekking guided by Muslims. When terrorists started their attack, they were covered and protected by Muslims. The first person to die defending was a Muslim, and you heard his brother. Did you not hear his brother? The first person who died protecting those tourists? You kindly next slide pere. And বোমা বিস্ফোরিত হৈছিল আৰু 6 বছৰ আগতে পুলৱামাত
So I'm trying to make you understand that what these saner people over there, they are saying they were the first who came to help for Muslims, the pony owners, the riders, the plow bidders. First aid and rescue was done by Muslims. Ambulances were driven by Muslims. They were treated in hospitals by Muslim doctors and nurses. And everywhere on social media, we see that all Muslims are terrorists. So this is the orchestrated narrative that is being played. Now see this Muslim MLA from Bihar. Please now run this. Who raised his voice against this Muslim discrimination. বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল আৰু 6 বছৰ আগতে পুলৱামাত যিদিনা 300 কেজি আৰডিএক্সৰ বিস্ফোৰণত প্ৰায় 42 জন ভাৰতৰ সিআৰপিএফ জোৱান নিহত হৈছিল সেইদিনা মই কৈছিলো যে ইয়াত চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষত এটা সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজন কৰি 2019 লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰত পুলৱামা বিস্ফোৰণ হৈছে আৰু সেইদিনা মই কৈছিলো আৰু নিৰপেক্ষ তদন্ত বিচাৰিছিলো Aminul Islam, MLA of the All India United Democratic Front, has been arrested by the Assam Police Crime Branch after his highly controversial and also offensive remarks alleging the involvement of the centre in the recent attack on tourists in Pahalgam. In fact, he also called Pulwama a conspiracy by the Indian government. So if you speak otherwise, go to jail, even if you are an MLA. And what's happening to the Muslims and Kashmiris? Please run this. हमने तो काम स्टार्ट कर दिया अपना गांव में भाई हम काट लग रहे हैं दो गए दोनों बार काट लग रहा है भाई भाई जा रहे भाई दो कटुए मारे गए छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। Just see dogs and Muslims not allowed. Where did you see this? राय मंदिर पे काम जो कर रहे हो तुम, अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसमें हिंदुओं को देख देख के मारा गया है पहचान करके, इसीलिए हम तुमसे इस काम से तुम्हें हटा रहे हैं। हम काम नहीं करा रहे हैं हम पे मंदिर पे तुम्हें, इसीलिए तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं कि तुम लोग जो है पूरा इस्लाम जो है हमारे हिंदू सनातन को टारगेट बना रहा है और हिंदुओं को देख देख के मार रहा है। And I just said earlier also that terrorism has no religion. There are no Muslim terrorists, there are no Christian terrorists, there are no even Hindu terrorists. So why an effort is being made to label the whole community, the Muslims, as terrorists? Is this part of some agenda? Is this part of that hate that systematically is being put in a society? That saffronization that is trying to be done, whose manifestation you saw that the Muslims and dogs not allowed, and where did we see that the world conscious and the world memory remembers those posters, and also that what ensued after that, the genocide and the suffering that ensued after that. So the irrationality that you see playing and the rational minds grapple to understand, it stems from somewhere perhaps over here. Lastly, those who are trying to tell within the India that there is something wrong, that something is amiss, what's happening there? Please listen to this. अगर यहाँ पर This is 24th April, a Kashmiri journalist. पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है, मच्छी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहां से? डोंट आस्क कश्मीरीज ऑन दिस, आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज। कितनी कंपनीज है यहाँ, आरआर है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, बीएसएफ है, वो क्या जग मार रहे थे सर? गवर्नमेंट क्या कर रही थी? मैं उससे सवाल कर रहा हूँ आप सब लोगों के माध्यम से कि क्या कर रहा था गवर्नर? होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, होम मिनिस्टर साहब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ये क्यों हुआ? And what happened next day to this gentleman, this journalist? He is being forced in and
Nobody knows where he is now. Now see in last clip that what's happening once you say and put your voices on social media. अपहरण कांड 1999, This is a social media influencer. 1999, संसद पर आतंकी हमला 2001, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017, गोधरा कांड 2002, पठानकोट आतंकी हमला 2016, उरी आतंकी हमला 2016, पुलवामा आतंकी हमला 2019, पहलगाम आतंकी हमला 2025। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर, लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। So she's just pointing out common facts that all these incidents are happening once the BJP government is in power. She's trying to just connect the dots, and there you go, and the big hand of the law comes. And what they are trying to do for the voices that are coming from outside the world, if you go to the next slide, what's happening outside? They have blocked all digital news channels of Pakistan, so that the voice of Pakistan of fact and reason, explaining what's happening, what are the actual facts, doesn't go to its citizens. They are blocking all websites, X handles, other handles who are talking about facts. This is what's right now happening on hourly basis. Why they are stifling it? Because they are afraid of truth. They don't want to face the reality. Lastly, I would just say that this tells us something very important. That what the Indians are trying to do is that there is a process of internalization of their external problems and externalization of their internal problems. Kashmir is an external problem, and they are internalizing it. Terrorism, extremism is an internal problem of India. Instead of handling it, instead of addressing it, they are externalizing it. This cycle is manifesting itself also in this Pahalgam incident. Thank you very much. We'll open the floor for questions. You moderate, Professor, with your permission. Yeah, please. The floor is open. Ms. Mona. Mona Khan from Independent Urdu. My question is from DG ISPR. Sir, what response and options are available to Pakistan in wake of your yesterday press briefing? Please. We are monitoring the situation very carefully in all domains. And accordingly, our responses and countermeasures in all domains are ready. And as you must have seen in the declaration of the National Security Council, the statement of the government of Pakistan that came last night also, that there will be decisive and assured actions. I will not go into the details, but rest assured, the people of Pakistan, with its full resolve, will defend the territorial integrity and sovereignty of Pakistan at all cost. I'll just add to what Lieutenant General Sharif said, that Pakistan will exercise restraint for the purpose of regional peace, but, and that is very clear, if provoked, and any action from the other side will be responded in a emphatic manner and in a stronger way. Thank you.
Aga Ikrar sir. Sir, my question, thank you so much, Aga Ikrar from DND News Agency. My question is to DG ISPR. Sir, yesterday and even today, you have with the facts and figures and with audios, you shared how Indian Army, not the intelligence agency, the Indian Army is involved in cross-border terrorism in Pakistan. What next now? For how long Pakistan would face this situation when the Indian Army is directly involved, paying people with the documentation? You have shared everything. So what would be next now? Well, the nation is united. The resolve of the leadership is in front of you. National Security Committee press release. We covered every point. We discussed in totality. And I must compliment all political parties who represent in the federation, federating units, all federating units in the Senate of Pakistan, which is a symbol of federation. There was the unanimous resolution, including, I'm repeating, all political parties. And I think the message was loud and clear that in terms of for sovereignty or territorial integrity, there is no compromise. And we are one, united, and with clear resolve that if any provocation takes place, then, don't blame us. And this is the message we have given while, communicating with world leaders in the last few days. Thank you. And Ms. Sumera? Just to add with reference to the evidence that you talked, this evidence is credible, it is verifiable for any transparent, independent inquiry by any investigators. And Pakistan will take up this case, is taking up and will continue to take up this case of this state-sponsored and abetted terrorism with all forums, including the international community. Thank you very much, spokesperson. This is Sumaira Khan from Sama Television. Sir, I have a two-pronged question. One is from the respected DG and the other is posing at Deputy Prime Minister and Foreign Minister. DG, if we talk about kinetic measures, we are right now engaged significantly eastern border and western border as well. So the terrorist might be thinking, terrorist who's operating right now significantly from across the border, if you talk about Afghanistan, I'm forced to name this country as well right now. So what is our situation? Are we stretching our army at two borders? What's our strategy to deal with this two-prong kinetic strategy? And Foreign Minister, I'm seeing you discussing the entire situation with a lot of world leaders, and you have been day in, day out, you are speaking to them. But to my shock and wonder, I did not see any statement from any country that is condemning that India is not presenting substantial evidence of Pahalgam attack. And yes, they are offering their condolences to the victims, we do. But where is the demand for evidence from India, and what forums exactly we are seeking to put up this question? And as DG has highlighted, that state-sponsored terrorism from India, what exactly we are going to do about it? Thank you so much. I'll answer the second half. Pakistan Army and Pakistan Armed Forces and law enforcement, we are a battle-hardened army. So, it may be a ploy, it may be a tactic, it may be a desire, a strategy for them to engage militarily on the eastern front so as to create space along the western border. But Pakistan Armed Forces, its law enforcement, intelligence, security agencies are fully capable of taking all these threats simultaneously with full force and effectivity. And its manifestation you just have seen in the last few days. As I told you that we have credible intelligence and that all the proxies of terror have been activated. But the security of the people is being done. The terrorists are being hunted and being taken down. So we are vigilant, we are watching everywhere. And I said earlier that we are watching their moves and what they are doing and their plans in all domains.
So whether they are in the domain of counterterrorism, non-kinetic, information operations, other domains, air, ground, sea, everywhere, and appropriate countermeasures are being taken, are in place, and there will be defeating and decisive responses. The second question, you see the action of the diplomatic world is always incident specific. The incident is Pahalgam. So that would be out of context what you expect, that while they are not condemning India, obviously they are condemning the terrorism, everybody, but I don't know whether you have seen the Chinese statement, whether you have seen the Tayyip Erdogan, the president of Turkey statement, and I explained earlier that most of the global leaders, they were very, very candid and requested to exercise restraint, and that's why we have announced that we will not be the first one to take any escalatory move. So, the policy of the government, is absolutely clear, and that's what we are following. So, surely this will be inappropriate, I think, at this stage. They haven't seen all this evidence, number one. The discussion right now is focused on an incident. So, it will be out of context if somebody goes out of the way and starts condemning why you're not dealing with all these things. So this is for your education to sharing with the media, with the nation, with the international community, that's what Jan Saab and spokesperson have tried to just run you through. Thank you. Khalid sir. खालिद महमूद जी एक्सप्रेस टीवी से। जनरल साहब, एक टेक्निकल सा सवाल है कि जो दोनों मुल्क के दरमियान साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में जो कंपैरिजन है, पाकिस्तान वहाँ पे कहाँ खड़ा है? और दूसरा मेरा सवाल है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इंडियन मीडिया जो है वो अभी से जो लास्ट ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करने की बातें कर रहा है। क्या ऐसा कोई मुमकिन है या ऐसा कोई खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान भी वो लास्ट ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है? Let me, before General Saab adds on, as for the warfare comparison is concerned, I think the conventional warfare comparison is over on 28th of May 1998. You are a nuclear power, and so is India. Again, at that time, we were not the first one. They, exploded 5 devices. There was a lot of, offers from the world leaders, including President Clinton and many others, and Pakistan leadership. Mr. Muhammad Nawaz Sharif was the Prime Minister of Pakistan. We accompanied on 28th of May in NDC, where General Jagir Kramal gave a briefing. What you asked, comparative warfare. So the decision was we have to go and respond to represent the sentiments of the nation as well. So, number one, so you are a nuclear power and you are recognized as a missile power as well. So no worries at all. Warfare is very much there, but when you say last option, if you are referring to the nuclear option, so obviously there is a national command authority in place in Pakistan, like all the countries who are nuclear, and it is their domain that in such eventuality that national command authority would meet, where again Prime Minister and the leadership of Prime Minister Shahbaz Sharif, the both the civil and military leadership who are the members of that command authority under the law of the land, they will sit and decide. Ji, ma'am. Want to add something? Yeah. On these particular domains that in which the comparison, I think this is not the forum to discuss that in cyber domain, electronic warfare domain, in the firepower domain, in the information domain, in the other domains, we start doing a comparison of 2-3 countries and powers at this time. I think this is not the forum right now. I gave you an overarching response that we are watching them very carefully in all the domains, and all the appropriate measures are in place. The response, as the Honorable Deputy Prime Minister said, will be befitting, it will be decisive and assured. सर ज़ाला नौरीन सुनो न्यूज़ से मेरे इसाक डार साहब से 2 क्वेश्चंस हैं। सर पहले तो ये कि गुज़िश्ता रोज़ DG ISPR की जानिब से ब्रीफिंग में बड़े वाज़ेह शवाहिद पेश किए गए जो ये साबित करते हैं कि किस तरह से इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में मुलविस है। तो क्या पाकिस्तान मुख्तलिफ सफारतकारों को बुलाकर और बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर कोई डोजियर देने की तैयारी कर रहा है? और सेकेंडली ये सर कि क्या अभी तक अमेरिका, चीन या किसी भी दोस्त मुल्क की जानिब से दोनों ममालिक
ममालिक के दरमियान तनाव की जो हालिया कैफियत है इसको कम करने के लिए कोई पेशकश की गई है? थैंक यू। देखिए, जहाँ तक डोजेस का सवाल है, एज आई सेड दैट वी आर एक्टिवली इन्वॉल्व विद द डिप्लोमेटिक कम्युनिटी. दे वर गिवन ब्रीफिंग इन मोफा बाय द फॉरेन सेक्रेटरी टू बिगिन विद, who are present in Islamabad. We are actively engaged with different high commissioners, ambassadors, charge d'affaires. Even today, US charge d'affaires called on me. So we are actively engaged on this thing 24/7. Number two, the वाज़े शवाहिद जो आपने बात की देखें, let me remind you, all this thing what you have seen, if I can quote Madeleine Albright book, the introductory remarks were by President Clinton. Now, what did he say? And it's not a recent episode; it's decades old. In that book, it is written that quoting President Clinton, he said he had the intel information that if he goes to India, there will be around 36 will be killed, murdered, and he responded that if I had gone, I had taken that information and not gone, then perhaps these 6 could have survived. But if I had not gone, I would not have discharged my responsibility as PUTUS, President of the United States of America. So it's not me who's saying, it's Madeleine Albright book. The person she's quoting has written the introductory remarks in that book. So this is, you see, and the actions are totally, unacceptable. Even in 1965, 1971 war, Indus Water Treaty was kept in place and was followed. Never before, since this 23rd announcement, never before. And there is no provision or possibility in the international legal dictionary the word abeyance in any treaty. So they can suspend it, but there is no provision of suspension. Thank you. Mateen sir. जी थैंक यू सो मच. डीजी मतीन हैदर, डीजी ISPR से सवाल है. आज हमें आपकी तरफ से अपडेट्स मुसलसल मिल रहे हैं और एक अपडेट ये है कि पाक फ़ौज ने अपनी जो रेगुलर मशक़ें वो शुरू कर दी है. एयरफोर्स ने ऑलरेडी शुरू की हुई है. रात के हमें वज़ीर इत्तलात का भी स्टेटमेंट मिला जिसमें यह कहा गया कि अगले 36 घंटे भारत की जानिब से हमले के लिए इंतहाई अहम हैं. आपसे स्पेसिफिकली ये पूछना है कि कितना बड़ा ख़तरा है, हमारी कौन सी जगहें पाकिस्तान में, क्या लाइन ऑफ कंट्रोल, आज़ाद कश्मीर, भावलपुर, किन जगहों पे ख़तरा ज़्यादा है और उस ख़तरे से निपटने के लिए हमारी तैयारी उन इलाकों में कितनी है. चूँकि एक्सरसाइज का क्लिप हमें आ चुका है. और डिप्टी PM FM से सवाल है, हमारा जो डिप्लोमेटिक स्टाफ न्यू दिल्ली से आ रहा था उनके साथ वाघा बॉर्डर के ऊपर बहुत बदसलूकी की जा रही है. एक नोट भी हमें फॉरेन ऑफिस के ग्रुप में इस हवाले से मिला. तो ये बताइए, ये भी इंटरनेशनल लॉ वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है जो डिप्लोमेटिक स्टाफ आ रहा है. हमने उनके स्टाफ को बड़े एहतराम से भिजवाया लेकिन हमारे स्टाफ के साथ बदसलूकी की जा रही है. तो बस ये 2 सवाल हैं. बहुत शुक्रिया. पाकिस्तानी वहाँ पे इस वक्त फंसे हुए हैं और उनको लाने के लिए वज़ारत क्या कर रही है? ये मैंने जो स्पोक्स पर्सन है उनको क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, इसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही मिनिस्ट्री. मेरा ख्याल 3 हो गया, फिर आप नया सवाल कर लें. जहाँ तक 24 से 36 घंटे का सवाल है, ये इट वॉज बेस्ड ऑन क्रेडिबल इंटेल इंफॉर्मेशन. So we thought that it would be appropriate late night, it should be made public. And that's why the information minister gave this statement. It was in the knowledge of the entire leadership, both civil and military. Number 2, बदसलूकी जहाँ तक आपने फरमाया, obviously this is very undiplomatic, unwarranted, unacceptable. So we will raise it at all proper forums, including the United Nations, because this is not on. Because we believe that respect dignity of the diplomats, no matter in which country they belong to and where they're moving to and from, we will take care of this. जहाँ तक पाकिस्तान के फंसों के ताल्लुक है, our High Commission in New Delhi is working on that, and we will coordinate. You see, it's something which the data is being collected, but obviously, since there were 48 hours for them to leave and for us to leave, because both actions were taken. So I think we are taking care of this thing. The spokesperson will give you next regular briefing with the more detail. Exactly.
आपने एक एक्सरसाइज का रेफर किया. दिस इज़ जस्ट वन पार्ट दैट वाज शेयर्ड विद यू. रेस्ट अश्योर्ड कि आपकी चाहे फ़ौज है, चाहे फ़ज़ाइया है, चाहे नेवी है, चाहे बाकी तमाम दिफा से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे हैं, वो हमा वक्त हर वक्त अपनी तैयारी में मसरूफ़ है. सो वी आर एवरीवेयर all the time. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. Military confrontation का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है. आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है. जी, मेरा नाम एजाज़ अहमद है, मैं JNN से हूँ. डॉक्टर साहब, एक तो आपसे सवाल है और जनरल साहब आपसे सवाल है. जनरल साहब से पहले पूछ लेते हैं कि एक तो ये जो एक्सरसाइज का मतीन ने तस्करा किया, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे वीडियोज़ भी आ जाती हैं कि ये हो गया, वो हो गया, इतनी मोर्चे गिरा दिए, इतने जहाज़ गिरा दिए. हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक इस हवाले से भी आप बता सकें कि एक्चुअली लाइन ऑफ कंट्रोल पर और वर्किंग बाउंड्री पर क्या सूरत हाल है. फिर इंडियन मीडिया बहुत बुलंद बांग दावे करता है कि हमारे पास रफ़ाइल आ गए हैं, पाकिस्तान के पास इसका तोड़ नहीं है. तो हमारे पास तोड़ क्या है उसका. और डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि आज ही अमेरिकी तर्जुमान ने ये कहा है कि मार्को रूबियो जो है US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो आपसे और इंडियन काउंटर पार्ट से बात करेंगे. इंडिया ने एक ये मजाक बनाया हुआ है कि हर कुछ साल के बाद वो एक फॉल्स फ्लैग करता है और फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम शुरू कर देता है. हमारी प्री कंडीशंस क्या होंगी और क्या मीडिएशन पॉसिबल है मौजूदा सूरत हाल में? नहीं, ज़रा एक सेकंड. ऑलरेडी उनके 4 सवाल हैं एक ही में, सो मेरा पहले हैंडल कर रहे थे. अभी करते हैं, अभी आपके पास. विल कम टू यू. तो इस पे अगर आप कमेंट कर दें, इज देयर एनी अपडेट ऑन द करंट सिचुएशन? देखिए, वी हैव ए नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिक्वेस्ट हमने भी भेजी हुई हैं, हमारे पास भी है. वी आर मैनेजिंग इट एज़ पर मैक्सिमम पोटेंशियल. लेकिन ये जो आपने सेक्रेटरी रूबियो की बात की, उन्होंने चूँकि मेरा शायद एक ट्रैवल था जो मैंने पोस्टपोन किया. ये जो आपने सेक्रेटरी रूबियो की बात की, उन्होंने चूँकि मेरा शायद एक ट्रैवल था जो मैंने पोस्टपोन किया. यू ऑल नो, काबुल के बाद मैंने ढाका जाना था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट मुझे भी भेजी हुई है और गालबन प्राइम मिनिस्टर हाउस भी आई है. तो whosoever is available will talk to him and he calls. Obviously Foreign Office as per the standard practice will tie up the time. जहाँ तक फॉल्स फ्लैग है, हमने तो इसको अपनी इवन पहलगाम पे सीरियस रिजर्वेशन फ्लैग कर दी हैं. पहले आपने सब कुछ देखा है जो जनरल शरीफ ने आपको दिखाया है. दिस एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर दैट वी डू नॉट बिलीव कि ये है, लेकिन इसके बावजूद वी हैव ऑफर्ड ओके फाइन, इफ हुआ है, यू से दैट इट्स हुआ है, तो प्लीज़ give the evidence to the neutral independent investigators. What is the problem about not having a probe? So अगर probe होगी तो only then we would know कि where do we stand. तो ये false flag जो है, ये एक इनका ड्रामेटिक किस्म का ये इनका प्लान है. पुलवामा देख लें, मैंने भी आपको मेडलिन ऑलब्राइट की किताब प्रेसिडेंट क्लिंटन के विजिट का बताया. आई वॉज प्रेसिडेंट 2 December 1998 when after the detonation in Oval Office with Prime Minister Nawaz Sharif, and we have dialogue Madeleine Albright, Sandy Berger, Rubin Talbot, they were all there. I, Sartaj Aziz Saab, apna Mushahid Hussain Sayyid, Shawaz Sharif Saab and Riaz Khokar were there. So you see, but these are the things one cannot divulge. These are national history and archives, and they are where it should be. So let me assure you, we know that there is false flag and how it is to be dealt with. So we have raised our reservations, offered independently. So I think gradually the international community, the way they drummed up false propaganda in the first 48 hours has died down already. You have seen that the Indians खुद वो सवाल वही पूछ रहे हैं और they are questioning many things. So this is how their narrative has virtually gone for the six, and their propaganda has fallen. So हम अभी भी हमारी जो ऑफर है वो है. जहाँ तक आपने ममालिक की जिक्र किया, मीडिएशन की बात की, देखिए मीडिएशन
नहीं इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, मीडिएशन तो कोई ज़रूरत नहीं है. So our friends have offered and they must be trying. The need of the hour is, because both countries being nuclear, need of the hour is any escalatory move can go to a direction which would be unsustainable, not between the two countries, maybe for the entire region. So it is a combined responsibility of friends and the regional actors to make sure that India doesn't make this mistake. But as General Sharif has said, on behalf of armed forces, they are alert, they are ready, and they are, inshallah, in a position to give a befitting response of the nature, and we will choose time and mode, of our liking. Thank you. I'll just try to add to that आपने कहा information आती है कि जहाज़ ये हो गया, मुख्तलिफ तरह information. अगर तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से ले रहे हैं तो आपको बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो आई वुड रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ ओनली रेफर टू द क्रेडिबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. स्पेशली ये जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं इसके अंदर, द सोशल मीडिया, द अकाउंट्स, दे आर नॉट ए क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा. अपने दावे की बात की, वो दावा कहते हैं कि जी हमारा राफेल और ये वो, तो उनके दावे तो पहलगाम पे भी हैं, उनके दावे तो बहुत सी चीज़ों पे हैं. उनके अगर हम उनके दावों पे चलना शुरू हो जाएं तो देन द वर्ल्ड विल लुक इंटायरली डिफरेंट. एंड लास्टली जो आपने DGMO की टॉक की बात की, देयर इज़ ए लॉन्ग स्टैंडिंग अरेंजमेंट ऑफ रूटीन होती है. DGMO एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश्ड है और वो हर ट्यूसडे को उसके ऊपर एक बातचीत होती है. इसके अंदर जो सा है, दोनों साइड्स की प्रोटोकॉल यही है कि वो इस बातचीत को, इस कॉन्टैक्ट को पब्लिक नहीं करते. वी डोंट नो दैट फॉर व्हाट रीज़न द इंडियंस थॉट इट्स नेसेसरी कि उन्होंने आके इसको पब्लिक करना है. परहैप्स दे फेल्ट, जिस तरह इन्होंने कहा कि इन द नैरेटिव, इन द इंफॉर्मेशन डोमेन दे हैव नथिंग टू टेल, तो दे थॉट इट्स कि जी इसको अपनी पब्लिक को बताया जाए कि हमने वहाँ पे सीज़फायर वायलेशंस की बात की है और हमने ये बात की है. So this is not something that is talked in public. So this is an arrangement, long-standing, between the two countries. जी सदीक साजिद जी, एक न्यूज़ है. डॉक्टर साहब, अभी आपने हाल ही में काबुल का विज़िट किया और उसके फौरी बाद ये 71 जो DG साहब ने बताया कि टेररिस्ट अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, प्रॉक्सीज़ की बात की, तो क्या आपकी उनके साथ इस हवाले से जो बात हुई उसका नतीजा इस सूरत में निकला कि शुरू में क्या कहा आपने? काबुल विजिट किया. जी. वो तो फिर वही जारी, बल्कि सबसे बड़ी तश्कील जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पे आई. दूसरा DG साहब, आपसे एक सवाल है कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मुसलसल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग, और उनका इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी फ़ौज को ग्रीन सिग्नल दे दिया है पाकिस्तान के ऊपर हमले का, और ये कहा गया कि वो अपनी मर्ज़ी से जगह का तयन कर लें, मकाम का तयन कर लें, टारगेट का तयन कर लें. तो हमारी तरफ से जो आपका इसका रिस्पॉन्स क्या होगा? मैं काबुल का जवाब आपको पहले दे देता हूँ. देखिए, डोंट मिक्स टू थिंग्स टुगेदर. यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स एंड यू हैव टू डील विद देम. दिस इज़ नो सोल्यूशन कि अगर हमें पता है कि उनकी सरजमीन माजी में इस्तेमाल हुई है तो हम अपने तल्लुकात को बंद कर दें. It is neither good for economy, nor trade, nor even Islamically, it's not allowed. So the government and the stakeholder decided that we should re-engage Afghanistan. So I visited Afghanistan. The visit was absolutely marvelous, both from political point of view, from economic and trade point of view, from refugees point of view. And also, वो नहीं करते, चॉइस साहब जनरली प्रेस टेक आउट नहीं करते, वो प्रेस रिलीज़ नहीं होती. इट इज़ अनयूजुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी अरेंजमेंट कि उन्होंने मेरे साथ खड़े होके हमारे काउंटर पार्ट ने, वी शुड अप्रिशिएट. बजाय ये कि अगर हम ऐसी चीज़ों पे क्रिटिकल होंगे तो जो उसका पॉजिटिविटी है वो इंडिया तो भेजेगा उनको. देखे आपने तो बड़ा, प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी मीटिंग हुई, मुझे बताया गया वो बहुत थोड़ी मीटिंग करते हैं. इट वॉज एलेबोरेट मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर खुद. उसके बाद DPM से मीटिंग हुई, उनकी पूरी कैबिनेट के जितने मेन विंग्स थे वो सारे थे, और फिर मुत्तकी साहब से मीटिंग हुई. तो मैं तो उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. हमें देखिए, हमने रहना है एक दूसरे के साथ, और हमारी जो बेहतरी है उनके लिए बेहतरी है, उनकी जो बेहतरी हमारे लिए बेहतरी है.
So government and the stakeholders, they decided that we should re-engage, और उसके नतीजे में मैं गया और the visit was absolutely fine. और मैंने यहाँ आके आपको नहीं बताया कि वहाँ मैं क्या कह रहा हूँ. मेरे बाएं हाथ मुत्तकी साहब खड़े थे और मैं हर चीज़ जो कुछ हमने अनाउंस किया, जो कुछ एग्री किया, मैंने ट्रांसपेरेंटली कौम को और दुनिया को बता दिया और उन्होंने भी उसको उसी पैराए में लिया, उसी तरह रिस्पॉन्ड किया. तो पहले अगर हम काबल को इसमें ड्रैग इन करेंगे, आई थिंक इट विल नॉट बी फेयर. सो इट इज़ नॉट इन नेशनल इंटरेस्ट. देखिए, वी आर नॉट कंसर्न कि वो क्या कह रहे हैं, वो उनकी अपनी कंजम्पशन के लिए जो कह रहे हैं. हम आपको बार बार ये बता रहे हैं, हम पहले भी कम्युनिकेट करते रहे हैं कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं. 2019 में भी हमने ये बताया था कि वी आर रेडी. वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी एग्रेशन. वी आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट एंड विल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ रीजन एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट. बट इफ दे थिंक दैट एग्रेशन इज द पाथ फॉरवर्ड, तो आवर मैसेज इज ओनली दिस: वी आर रेडी, डोंट टेस्ट इट. Thank you, sir. Jiang Chao, Xinhua News Agency. We have seen that in the past days, Deputy Prime Minister and Foreign Minister held a phone call with Chinese Foreign Minister Wang Yi, and according to a release from Chinese Foreign Ministry, China reaffirmed its support to Pakistan on counterterrorism and safeguarding its national interests and national authority and territory, and also support to carry out investigation on the incident in Pahalgam in a fair and objective way. So my question first to DG ISPR that. One thing when in your presentation about the Chinese nationals who are being attacked on October the 6th, 2024, that a account on social media to show indicating that this account knows the attack ahead of the thing happen. So have you ever traced the background of this account? Who are behind it? And are you planning to present these evidence after the investigation to your Chinese counterparts? This is my first question to DG ISPR. So second question, that we have already seen yesterday that Indian authority has, especially its leadership, has released a lot of signal on solving the issue by forces. Well, we have seen Pakistan has carried out a lot of intensive diplomatic activity with neighboring countries and major countries in the past days. Has Pakistan have planned to propose a resolution or propose a case in the UNDC to seeking for pass a resolution to limit both sides or India side to carry out the war to solve the issue? This is my second question to Deputy Prime Minister. Thank you. Well, I had detailed telephone call, long telephone call with His Excellency, the Chinese Foreign Minister on Sunday afternoon. He was traveling. He was at that time. I sent him a message. He was in Central Asian states traveling to Brazil for BRICS meeting. We were very clear, and I am grateful that he supported. I explained to him. He was obviously up to date. So he supported our stance and offer of the independent investigation. He says a very good offer, and he emphasized that it should be accepted and independent investigation should take place. The second, advice, as we are ironclad friends and brothers, was that we must try and exercise restraint in the interest of the regional peace and security. So I assured him that, as I have told even in the Senate of Pakistan, I have also said it publicly, we will not be the first one to take any escalating move. But he obviously fully agreed. So his advice was that we should avoid any escalating move,
and exercise restraint, which we have the policy by the civil and military leadership have already decided that we will not do the first move. So rest I have already clarified. Your question about the Pakistan plan resolution in the UN Security Council, we will consult. As you know that right now we are moving diplomatic way. Obviously, I have to cancel my visit to Dhaka under the circumstances, which is scheduled for 28th, 29th. So we are taking care of everything. So if the leadership would decide for moving a resolution, we will look into that. The resolutions in UN Security Council sometime get shooted down by the P5. They have the veto power. So we are one of the 10 non-permanent elected members. So there's a different debate. We can discuss sometime the reforms in the UN Security Council, the multilateral system, which is weakening very rapidly. So it's not the time. But we will obviously, through consultative measures, because we don't want to, present a resolution and it just doesn't get through. Because you have just seen the press statement filed by US, United Joint States of America. It took 2 days because we had serious reservations on 2 points, and we got it fixed. We got Jammu and Kashmir included. We got TRF, removed. And after that, it was interesting that within the next 48 hours, TRF actually disclaimed that we have nothing to do with this thing. So thanks God, our argument has been proven, and the position what we took stands vindicated. Thank you. On the question of the X account, first I would like to say that it is a great tragedy, the loss of the valuable lives of our Chinese friends who were victim of externally sponsored and abetted terrorism. As you saw that as you highlighted the X account that you referred, a forensic of that account tells a lot about that, from where it's being operated, which agencies. So it has clear linkage with India. As I highlighted, that it was the activity on Pahalgam incident, amongst the first one to come and start pointing fingers from these accounts on Pakistan, on Islamist terrorism. Beforehand, claims on Miawali airbase attack. Beforehand, claims of an attack that something is going to happen in Karachi. Immediate reporting of that unfortunate incident. And then amongst the first one to say, while we were not sure that who these foreigners were, that the Chinese were victim of that incident. So the forensics is there for all to say. Of course, Pakistan and China share a very organized and institutionalized method of information sharing in the domains of these investigations. So all the relevant information, investigations are shared with the friends. जी सर, सर आपका राइट जी सर, मैं सैयद ज़फ़र हुसैन मेरा नाम है सर, दुनिया न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा सवाल जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से है। सर, आप पॉलिटिशियन हैं, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी हो जाए। सर, गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से सारी सिचुएशन चल रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? वो कहीं हमें फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहे। वो कौम के लीडर हैं, वज़ीर आज़म हैं, क्या उन्हें नहीं चाहिए कि वो फ्रंट पे आके फ्रंट से कौम को लीड करें, कौम को इत्मीनान मिलें और कोई कौम से खिताब कर लें, बताया जाए कि क्या हो रहा है, क्या हुकूमत करना चाह रही है सारी सिचुएशन को डील करने के लिए। एक मुल्क से ये जंग का मामला है, कोई छोटा इशू नहीं है। फिर आपने ये कहा कि करारदाद सेनेट ने पास कर ली है, ये कौम की आवाज़ है। मैं ये पूछना चाहूँगा क्या 15-20 सेनेटर्स की मौजूदगी में करारदाद की मंजूरी को कौम की आवाज़ करार दिया जा सकता है? आपका मुंतखब बयान के तहत तमाम सियासी जमातों को बुलाकर इस मामले पर हमने इत्मीनान में क्यों नहीं किया जाता? कौम के अंदर एक जज्बा पैदा करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? ये क्यों नहीं बताया जाता कि कौम इस मसले पर इकट्ठी है? हुकूमत के पीछे Political statement well taken. Let me answer. देखें,
भाई जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है, आई फेल टू अंडरस्टैंड, या तो शायद आपको मौका नहीं मिला. स्टार्टिंग फ्रॉम right after arrival from Ankara in Islamabad, 23rd evening, we have been in touch throughout. And very next morning, National Security Committee of Pakistan meets. His, statement after that, the National Security Committee's press release, and after that, series of interactions by Prime Minister. I'm amazed कि आपको ये भी नहीं पता, तो बड़ा हैरानगी की बात है. या तो आपको मौका नहीं मिला, या आप कहीं और इंडियन चैनल्स ही देखते रहे हैं इस दौरान. दूसरा जो तो इसलिए गायब को तो ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. I mean, frankly, we are all, the military and the civil leadership under his chairmanship has been working day and night. And आपने देखा कि हम लगे हुए हैं, and I think we try from MOFA to keep giving a little piece of information about each movement we do. दूसरी जो आपने फरमाया कि 15-20 महले, अगेन आपकी, मैं चूँकि अकाउंटेंट हूँ, आप शायद नॉन अकाउंटेंट हैं, ये 15-20 तो मुझे नज़र नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद थी. कम अज़ कम तमाम पार्टीज़ के तमाम जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, इफ़ यू रिकॉल, अगर आप मौजूद थे, तो हमारी 2 घंटे मीटिंग हुई. हमने 24 की रात को ही एक ड्राफ्ट, तो इसे स्टैंडर्ड ये प्रैक्टिस है कि ये फॉरेन ऑफिस का काम होता है, हमने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बना के वो 11 बजे रात को दे दी. मैं चूँकि आपने सवाल किया तो मैं इसकी तफसील शेयर कर रहा हूँ. तमाम को दे दी. अगले दिन सेनेट इजलास से 1 घंटा पहले मीटिंग हुई हमारी, और मैं ख़ुद उसमें हाज़िर हुआ. और उसमें हमने खुले दिल के साथ जो किसी ने वैल्यू एडिशन प्रपोज की, वी टुक इट. और आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, यू नेम जो उधर नहीं थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वर. और कहाँ बैठे? लीडर ऑफ द अपोजिशन के कमरे, जहाँ मैं कभी होता था. अभी मैं लीडर ऑफ द हाउस में बैठता हूँ, तो हम वहाँ बैठे जहाँ शिबली फराज साहब का ऑफिशियल चैम्बर है. तमाम ये कोई ईगो का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है. ये एक नेशनल इशू थी. मैं बड़ी खुशी के साथ मैं जब पहुंचा तो उन्होंने कहा जी कि वो लीडर दी अपोजिशन के कमरे बैठे हैं, उनको बुलाएं. मैं कहा नहीं, मैं उधर जाऊंगा. हम सब बैठे खुल के 2 घंटे. अगर आपको याद हो तो इजलास लेट शुरू हुआ. सो विद द कंसेंसस ऑफ दी ऑल पार्टीज. तो ये ना प्लीज़ कहें, दिस विल बी ए वेरी अनफेयर स्टेटमेंट कि जी 15-20 सेनेटर्स के मौजूदगी में अगर रेजोल्यूशन पास हो गई. आई वॉक देम थ्रू पूरी जो उस वक्त तक की कार्रवाई थी, सबको हाउस में जब मैंने रेजोल्यूशन पास की. एक तरफ मेरे दस्तखत है, दूसरी तरफ लीडर ऑफ द अपोजिशन का दस्तखत है उस रेजोल्यूशन के ऊपर. यू कैन गो एंड गेट द कॉपी. और उसके बाद कल 2-3 दिन डिबेट हुई. कल जब डिबेट को मैंने कंक्लूड किया, फ्रॉम दैट पॉइंट टिल यस्टरडे इवनिंग, जब वो प्रोरोग हुआ उससे पहले, मैंने जो मज़ीद जो डेवलपमेंट्स हैं इस मामले के हवाले से, आई जस्ट अगेन शेयर्ड एंड आई टोल्ड देम कि जब भी इजलास दोबारा आएगा मैं आपको बाकी भी मजीद जो कहा हो. तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा और क्या ट्रांसपेरेंसी हो सकती है भाई. और सेनेट बिल्कुल ही कौम कटी है. अब हम ऐसे मैसेजेस ना दें. देखिए, इंटरनल पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं और वो होते हैं. इट इज़ आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स टू डील विद द डिफरेंसेस, और डील करते रहे को. मैं तो पहली दफ़ा नहीं कर रहा, मैं पिछले 35 साल से यही झक मार रहा हूँ. तो आई विल कंटिन्यू टू डू दैट प्लीज़. आज़म इसाक डार और डीजी ISPR. नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और डीजी ISPR मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीजी ISPR ने कहा कि तमाम पहलुओं से सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं. मुल्की सालमियत और खुदमुख्तारी का किसी भी कीमत पर दिफा करेंगे. स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे. तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि हमने जवाबी कार्रवाई के तमाम तर इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं. भारत की जानिब से पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया गया. सूरत हाल का बहुत करीब से जायज़ा ले रहे हैं. सूरत हाल के मुताबिक जवाब दिया जाएगा. डीजी ISPR ने कहा कि हमने तमाम इक़दामात कर लिए हैं और पाक फौज सरहदों पर चौकस है. कौम मुत्तहिद है. कौमी सलामती कमेटी का एलामिया आ चुका है. डीजी ISPR ने कहा कि पहलगाम वाक़या लाइन ऑफ कंट्रोल से 230 किलोमीटर दूर हुआ. हम पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ पर जाएंगे. जाए वक़ुआ से पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए कम से कम
30 मिनट का सफ़र है। 10 मिनट में कैसे मुमकिन है कि कोई FIR दर्ज करा दे? 10 मिनट में दर्ज FIR में हैंडलर्स जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। DG ISPR ने कहा कि वाक़ये के फौरी बाद दर्ज FIR ने सवालात पैदा कर दिए हैं। पहलगाम वाक़ये को फौरी तौर पर मुसलमानों से जोड़ दिया गया। भारतीय मीडिया ने पहलगाम वाक़ये के फौरी बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इतने कम वक्त में लोगों की शनाख्त किस तरह मुमकिन हुई। भारत ने पहलगाम वाक़ये को फौरी मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। अफवाज पाकिस्तान और खुफिया एजेंसियां तमाम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। इत्तलात हैं कि भारत के आलाकार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुतहरिक हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि सबूत हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्विस है। पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द वाक़यात भारत स्पॉन्सर्ड हैं। पहलगाम वाक़ये के बाद कश्मीरी अवाम के घरों को गिरा दिया गया। पहलगाम वाक़ये में सयाहों की जान बचाने वाले मुसलमान थे। Crore distance from the Badori bulge at the place, it is approximately 100 kilometers, and on the road and tracks it is more than 200 kilometers. But that is from the tip of the Badori bulge. From any nearest Pakistani town, let's say it's Bagh, it's even much more. So what we are trying to do here is to walk you through facts of this incident rather than the allegations that are being made. So if the allegation is that it's the Pakistan-based so-called terrorists did this incident, then you need to be cognizant of where it lies, how far deep it is inside the illegally occupied Jammu and Kashmir. If you see the terrain on this map slide, you will see that it's quite hilly. It's not the sort of terrain which is very friendly, and not a sort of terrain where the all-weather fair roads exist. It's mostly on 4x4 and the horseback that the travel is being done over there. If you go to the next slide, so there's a track, then comes the road. So approximately, if you see, it takes about, we can estimate that about 30 minutes for someone to move from the incident site to the police station. So if the incident, as per the FIR, was from 13:50 and it is 14:20 hours, so how it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. And if we see this FIR closely, there are 3 points. The time factor, the time aspect has been, I think, repeatedly, clearly enunciated. There are 2 more things that I would like to draw your attention. That the FIR lodged after 10 minutes states that these were across the border. The handlers of this incident were across the border. So they established it in 10 minutes. While the incident was going on, before that, the intelligence or the security was so, we can say, flat that the incident happened, there was no intelligence, but within 10 minutes, they had such complete intelligence that they were established that it was across the border handlers. And secondly, it says over there that there was indiscriminate firing. However, we also know that a consistent narrative was made, is being made, that this act of terrorism was done on base of religion. That the Muslims, that it was the segregation was done and Hindus were killed. So I would request if you can go to the next slide. Now,
if you please see this clip which has been made at the time of incident, please run it. इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब। बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपके वक्त का। आबिद साहब, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके कमेंट्स चाहूँगा। जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल देखी, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रेस था जी, क्योंकि इसमें जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो थे और हमारे स्पोक्स पर्सन थे फॉरेन ऑफिस के और डीजी ISPR थे। तो आई थिंक कि ये वो जो कम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स और जो पहले भी खैर पाकिस्तान की तरफ से बहुत सीरियसली इस इशू को हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो आ रही थी, लेकिन आई थिंक कि ये फाइनल और क्लियर मैसेज है जो कि इंडिया को आज दे दिया गया, जिसमें एक जुमला बहुत ज़बरदस्त डीजी ISPR ने कहा कि हमें आजमाना मत, हम तैयार हैं। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी एक अच्छी बात की कि आप सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन हमसाये नहीं बदल सकते। तो हम उस रैशनैलिटी में इस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए रेडी हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए और रैशनैलिटी से बात करने के लिए। लेकिन अगर फिर भी उसको खुदा ना खास्ता ये समझा गया कि शायद खुदा ना खास्ता वो कोई हम वीकनेस का सिग्नल दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब जो है वो उससे ज़्यादा और कह लीजिए कि एक क्वांटिफाइड टर्म्स में दिया जाएगा। तो उस लिहाज से अगर देखें तो बहुत ज़बरदस्त थी। और इसमें जो एक और चीज़ जो मैंने देखा विच इज़ वेरी पर्टिनेंट, कि वो जितनी वॉरफेयर्स हमारे अगेंस्ट इंडिया इस वक्त साइमल्टेनियसली रन करना चाह रहा है, चाहे वो पोलिटिकल वॉरफेयर है, इकोनॉमिक वॉरफेयर, वाटर वॉरफेयर है, मीडिया वॉर है, इन्फो वॉर है, हाइब्रिड वॉर है, डिप्लोमेटिक वॉर है और वॉर थ्रू फिफ्थ कॉलमिस्ट है या वॉर थ्रू टेररिस्ट है, और आखिर में काइनेटिक वॉर है जिसके लिए वो जहाज उड़ाता है और अपने बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करता है और फिर जब यहाँ से स्क्रैम्बल होते हैं एयरफोर्स के जहाज और उसके लॉक होते हैं उनके रडार में तो वो वापस चला जाता है। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि जो उनका रिस्पॉन्स है इंडियन का, जो उनका रेटोरिक है, जो तरीक़ाकार है, वो बहुत ही नॉन डिप्लोमेटिक, नॉन प्रोफेशनल और नॉन रैशनल है। तो अगर ये इसी डगर पे ये उनकी सारी स्टेटमेंट्स आती रहीं और वो अपने ही मीडिया के कैप्टिव होके ये सारा कुछ करते रहे, तो आप इसमें जिक्र भी हो रहा था जैसे उन्होंने हमारे चैनल्स बंद कर दिए। मैं तो अभी ये सुन के हैरान रह गया कि अभी ये खबर आ रही थी कि वो चैनल्स जहाँ पे हमारे इवन ड्रामाज आते हैं यूट्यूब के, उन्होंने वो भी बंद कर दिए। सो वो खौफजदा है ना सिर्फ हमारी हार्ड पावर से, बल्कि जोसेफ एस नाइक की जुबान में हमारी सॉफ्ट पावर से भी खौफजदा है। वो जो हमारे ड्रामे भी बर्दाश्त नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे ड्रामे बहुत पॉपुलर हैं और वो हमारी ट्रू पिक्चर हमारी सोसाइटी की, जो कि एक टॉलरेंस की पिक्चर है, एक भाईचारे की पिक्चर है, एक अच्छे एक मामलात की पिक्चर है, वो भी नहीं वो देख सकते, क्योंकि उन्होंने जाहिर है दुनिया को ये डिपेक्ट करना है कि खुदा ना खास्ता हम शायद एक टेररिस्ट स्टेट हैं, लेकिन हकीकत जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने और डीजी ISPR ने क्लियर कर दी कि टेररिस्ट कौन है। उन्होंने बहुत सिस्टमैटिकली अपना नैरेटिव बिल्ड करते हुए ये बता दिया कि किस किस तरह पे किस किस जगह में इवन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ, इवन जियोग्राफिकल एविडेंस के साथ ये क्लियर कर दिया कि टेररिस्ट कौन है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया इटसेल्फ हो। और जो उन्होंने एक ज़बरदस्त जुमला इस्तेमाल किया कि एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम्स और इंटरनलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, आई थिंक ये इंडिया इसके अंदर कैद होकर रह गया। और मैं इसके साथ साथ ये कहूँगा कि देखिए जो वॉरफेयर है ये एक बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है और जो लोग देखते हैं वॉरफेयर को, इंडियन चैनल्स पे बार बार आ रहा है, एक अर्थमेटिक आता है कि पाकिस्तान के पास इतने टैंक हैं, इतनी आर्टिलरी गन्स हैं, इंडिया के पास इतनी हैं। तो जब वॉरफेयर जब इस तरह की हो जिसमें हम आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं उसमें अर्थमेटिक नहीं है, जियोमेट्री ऑफ वॉरफेयर होती है। और पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है वो जियोमेट्री ऑफ वॉरफेयर का है, यानी हम जो टेरिटरी है कश्मीर की उसको हम इंटीग्रल पार्ट समझते हैं और हमारी जो अर्थमेटिक पे नहीं, हम क्वांटिटी पे, क्वालिटी ऑफ मैन पावर पे, क्वालिटी ऑफ सोल्जर पे बेस करते हैं। और ये ना सिर्फ यूं कहिए कि इंडिया को पता है, ये पूरी दुनिया को पता है। हमने इसीलिए
इसीलिए हमने ज्योग्राफिकल वॉर एक पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह जीती है, जो अफगानिस्तान की वॉर थी। वो अरिथमेटिक की वॉर होती तो खुदा ना खास्ता हम उसको 20 साल तक या 25 साल तक ना लड़ पाते, क्योंकि अरिथमेटिक और फिगर्स में और डाटा में आप वो वॉर नहीं लड़ सकते। तो अगर आपने ये देखिए कि जो पाकिस्तान आर्मी है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तानी कौम ने भी इसमें बहुत कुर्बानियां दी हैं, अभी भी पूरी कौम तैयार है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए और ये देखते हुए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेसेस थी, बहुत ही क्लियर मैसेज था, और ये क्लियर पॉइंट, और मैं समझता हूँ ये लास्ट मैसेज था टू द कमिटी ऑफ नेशन, टू द पावर्स टू बी, एंड टू द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पॉलिसी मेकर, एंड मोर सो टू द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि जो पीपल ऑफ इंडिया है उनको भी इस सारे नैरेटिव ने हाईजैक कर लिया है। और इस जो नैरेटिविटी बनाई है इंडिया ने, जिसको हम जब हम एक स्टोरी को प्लॉट करते हैं, तो मैं एक लिटरेरी टर्म में हम उसको कहते हैं द आर्क ऑफ नैरेटिविटी, जिसमें एक्सपोजिशन ऑफ स्टेटस होता है, फिर राइजिंग एक्शन होता है, फिर क्लाइमैक्स एक्शन होता है, फिर फॉलिंग एक्शन होता है, और फिर रेजोल्यूशन होती है। तो आई थिंक अब वो रेजोल्यूशन की तरफ उनके लिए जाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो उन्होंने आर्क ऑफ नैरेटिविटी इतनी नेगेटिविटी पे बना दिया है कि अब वो किसी रेजोल्यूशन की बात करना, किसी सोल्यूशन की बात करना, किसी रिकंसिलिएशन की बात करना, आई थिंक वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो वो अपने ही फैलाए हुए एक जो आप कह लीजिए कि एक जो अपना वो था उसके अंदर वो हो गए हैं, काबू आ गए हैं। और ये आई थिंक एक बहुत सीरियस सिचुएशन है। इट इज जो बॉर्डर्स को देखिए आप, जो डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रुप्स को देखिए, जो प्रॉक्सिमिटी देखें आप एक दूसरे के साथ, ये कोई जंग जो है वो किसी मुल्क से कोई मुल्क क्रॉस करके, कोई बफर क्रॉस करके नहीं करनी, आपको ज्वाइंट हैं, आप एक तरह से जुड़वा टेरिटरीज हैं, तो वो कहीं पे भी आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आई थिंक वो बहुत अच्छी प्रेसेस था, इसमें ये भारत को बेफिटिंग जवाब दे दिया गया है। आबिद लतीफ साहब, आपने वक्त दिया हम न्यूज़ को, आपका शुक्रिया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के साथ इस साल तकरीबन $4 बिलियन से भी बढ़ जाने वाली IT एक्सपोर्ट्स, 26,000 से ज्यादा टेक कंपनीज और लाखों ज़हीन दिमागों की क़यादत में हम तैयार हैं। शुरू होने वाला है डिजिटल सरमायाकारी का एक नया बाब, और दुनिया भर से 45 से जायद अक़वाम के नुमाइंदे आ रहे हैं इस्लामाबाद। मसनूई जहानत से क्लाउड टेक्नोलॉजी तक जिद्दत भरे मुस्तकबिल का हाथ है अब हमारे हाथ में, जिसके साथ हम बढ़ेंगे आगे से आगे। इस्लामाबाद है अब डेवोस ऑफ डिजिटल FDI, डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम 2025, टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान। इन्वेस्ट, इनोवेट, थ्राइव। कोलगेट मैक्स फ्रेश, नींद भगाओ, ताजगी जगाओ। पंजाब में तालीम और मेरिट की बुनियाद पर नौजवानों को डिजिटली एम्पावर करने के लिए वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अपने वादे के मुताबिक 40,000 तो नहीं, इसको कम से कम 1 लाख लैपटॉप्स तक जाना चाहिए। 1,12,000 कोर i7 लैपटॉप पंजाब भर की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, HED कॉलेजेस और डेंटल एंड मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेरे तालीम फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के नौजवानों में तकसीम करने का अज़्म किया है। वादे वही होते हैं जो तकमील को पहुँचे। Try the all-new Wheat Pure. It smells amazing. Contains cucumber, aloe vera, and shea butter extracts or hair, dermatologically tested to give smooth and moisturized glowing skin. Choose pure. Choose Wheat Pure. वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के साथ इस साल तकरीबन $4 बिलियन से भी बढ़ जाने वाली IT एक्सपोर्ट्स, 26,000 से ज्यादा टेक कंपनीज और लाखों ज़हीन दिमागों की क़यादत में हम तैयार हैं। शुरू होने वाला है डिजिटल सरमायाकारी का एक नया बाब, और दुनिया भर से 45 से जायद अक़वाम के नुमाइंदे आ रहे हैं इस्लामाबाद। मसनूई जहानत से क्लाउड टेक्नोलॉजी तक जिद्दत भरे मुस्तकबिल का हाथ है अब हमारे हाथ में, जिसके साथ हम बढ़ेंगे आगे से आगे। इस्लामाबाद है अब डेवोस ऑफ डिजिटल FDI, डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम 2025, टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान। इन्वेस्ट, इनोवेट, थ्राइव। पहल नहीं करेंगे लेकिन जाहरियत का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने इंतहा पसंद मोदी को दो टोक बता दिया। नायब वजीर आजम इसाक डार ने कहा भारत यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता।
पानी पाकिस्तानी अवाम की लाइफलाइन है। पानी रोकने का इकदाम जंग तसव्वुर होगा। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ और तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसाक डार ने कहा, भारत जानबूझकर खित्ते में हालात को कशीदा कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया के साथ राबते में है, फौज अलर्ट और चौकस है। Holding an abeyance of the Indus Water Treaty is unilateral and illegal. Pakistan is an agrarian economy. Millions of people are dependent on the waters being regulated by this treaty. That any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of the low riparian will be considered as an act of war. Indian media and political leaders are directing a similar discourse against Pakistan. This highly irresponsible ploy for narrow objective gains is dragging the entire region towards extreme instability. Pakistan will not be the first one to resort to any escalatory move. However, in case of any escalatory move by the Indian side, we will respond very strongly. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके वक्त का। मसूद साहब, आपने यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और सुनी होगी। आपके कमेंट्स चाहूंगा, खास तौर पर यूट्यूब के हवाले से जो ब्लॉक किया गया है भारत के अंदर, अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो यूट्यूब को ब्लॉक करना, ट्विटर को ब्लॉक करना, इवन पाकिस्तानी स्टार के जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं उन तक को ब्लॉक कर दिया गया है। देखेंगे, बड़ा सिंपल सी बात है, वो सच का सामना नहीं कर सकते हैं। जिस नैरेटिव झूठ पे उनका नैरेटिव बेस था वो तो शिकस्त उनको मिल चुकी है। और स्पेशली जिस तरह हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने उसको उठाया, एक्सपोज किया, तो वो अभी बैकफुट पे चले गए हैं। और उन्होंने उन यूट्यूब चैनल्स को अलाउ किया है जो उनका नैरेटिव लेके चलते हैं। खास तौर पर जो पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हुए हैं, ये वही है जो बिल्कुल इंडिया बेच रहा है, वही नैरेटिव लेके पाकिस्तान को मलाइन कर रहे हैं। जो मुहिब वतन लोग थे उनको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, मुहिब वतन चैनल्स को ब्लॉक कर दिया। बाकी जो एंटी पाकिस्तान जो रॉक पेरोल पे थे, बस उनको उन्होंने फैसिलिटेट किया। ठीक, मसूद साहब आपने वक्त दिया हम न्यूज को, आपका शुक्रिया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। मुसद्दिका इत्तलात हैं कि पहलगाम के ड्रामे को बुनियाद बनाकर भारत कोई फौजी मुहिम जोई कर सकता है। पाकिस्तान ने भारत की तरफ से किसी किस्म की कार्रवाई का भरपूर और फैसला कुन जवाब देगा। नुकसान का जिम्मेदार भी भारत होगा। भारत की फौजी मुहिम जोई खित्ते और दुनिया में तबाहकुन नताइज का बायस होगी। उन्होंने वीडियो बयान में कहा कि हमने पहलगाम हमले पर भारत को सच्चाई का पता लगाने के लिए आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की, मगर बदकिस्मती से भारत ने तसादुम का रास्ता चुना। पाकिस्तान भारत का खित्ते में जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। भारत के इक़दामात खित्ते में कशीदगी को जन्म देंगे। पाकिस्तान दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ पहलगाम वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश कर चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी करवाने में पाकिस्तान का कोई मफाद नहीं। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा कि आलमी बरादरी तस्लीम करती है पाकिस्तान का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। दरियाए सिंध में पानी की जगह खून बहने के सवाल पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध तास मुआहिदे के खिलाफ मेरा रद्द अमल पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। पाक फौज सरहदों पर शहादतें देती है, वतन का दिफा करती है। हम पंजाबी बाद में पहले पाकिस्तानी हैं। तमाम पाकिस्तानियों से अपील की है कि वो अपनी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। सियाचिन की बुलंदियों से बुहिरे अरब के पानियों तक मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए मुकम्मल तैयार। 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाक फजाइया के तैयारों ने भारतीय जंगी जहाज़ों की फौरन निशानदही की। बरवक्त कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे फरार हो गए।
पाक फौज की जंगी तैयारियां भी उरूज पर हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में जंगी मशकें जारी हैं। छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाने और इन्फेंट्री ने भी मशकों में हिस्सा लिया। पाक फिजाइया की बरवक्त कार्रवाई, दुश्मन के राफेल तैयारे भागने पर मजबूर हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारतीय फिजाइया के 4 राफेल तैयारे मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग करते हुए पाए गए। इस दौरान पाक फिजाइया के तैयारों ने फौरी निशानदेही की। पाक फिजाइया की मुस्तैद मौजूदगी देखकर भारतीय तैयारे बौखलाहट का शिकार होकर फरार हो गए। सियाचिन की बुलंदियों से लेकर बहिरा अरब के पानियों तक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की जंगी मशकें जारी हैं। जंगी मशकों में छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाने और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। ज़मीन साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ, जो कहो बुलंद सुने सारा जहां, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। ये जंगी मशकें सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में की जा रही हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि पाक फौज के जवान दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए पाक फौज के जवान हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पाक फौज हमा वक्त चौकस और फर्ज शनासी के जज्बे से हर वक्त सरशार है। किसी भी भारतीय जारहियत की सूरत में दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। भारत ने एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देकर दुश्मन को खामोश करवा दिया। 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात एलओसी के गयानी और मिंडल सेक्टर में फायरिंग की गई। जराये के मुताबिक जंगी जुनून में मुब्तला भारत सरहदी इलाका खाली करवा रहा है। अटारी सेक्टर में भी किसानों को फसलों की कटाई के अहकाम दिए गए थे। आवाम को हकाइक से बेखबर रखने के लिए सैकड़ों पाकिस्तानी चैनल ब्लॉक कर रखे। भारत पर जंगी जुनून सवार सीज फायर मुआहदे की फिर खिलाफ वर्जी कर दी। भारतीय फौज ने 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए कयानी और मिंडल सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी, जिसका पाक फौज ने भरपूर और मौसर जवाब दिया, जिससे दुश्मन खामोश हो गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से दुश्मन के मुतादिद मोर्चे तबाह हो गए, जबकि मकबूजा कश्मीर में वाक़े भारतीय फौज की चकपुतरा चेक पोस्ट को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। मौसर कार्रवाई के बाद भारतीय फौज की जानिब से फायरिंग बंद कर दी गई। इससे कबल भारत ने मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों से शहरियों को खाली करवाया है और वहां मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज भी किया जा चुका है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि भारत की यह इश्तियाल अंगेजी इसके जंगी जुनून की अक्कासी करती है। डीजी ISPR ने कहा, पाक भारत DGMOs के राबते मामूल की बात है। हर मंगल को बातचीत होती है। इन राबतों को अवाम में नहीं लाया जाता। मुझे नहीं पता इन्होंने इसको अवाम में लाने का क्यों सोचा। शायद वो अवाम को बताना चाहते थे कि जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की बात हुई है। वक्त हुआ है न्यूज अपडेट्स का। दिस न्यूज अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय मेरे लिए कंफर्ट, इसको चाहिए बचत, इसके लिए स्पीड। इन ड्राइव स्किन को सॉफ्ट एंड सेंटेड, वाइटल सोप, अ बेटर चॉइस। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, भारत की इश्तियाल अंगेजी पर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जवाबी कार्रवाई के लिए तमाम इकदामात मुकम्मल कर लिए और पानी रोकने का भारतीय इकदाम जंग तसव्वुर होगा। पाकिस्तान ने मोदी सरकार पर वाजे कर दिया। इशाक डार ने कहा, जंग में पहल नहीं करेंगे। मिस एडवेंचर किया गया तो अपनी मर्जी के वक्त और जगह पर जवाब देंगे। Introducing Vital Musk Freesia Beauty Soap.
जिसके एडवांस डिजाइन से मिले जेंटल स्क्रबिंग और इसके वाइटल इंग्रेडिएंट्स रखें स्किन को सॉफ्ट एंड सेंटेड। वाइटल सोप, अ बेटर चॉइस। बिरयानी तैयार है, तुम कहाँ हो? अभी पहुंचे। 3 बाई 1 मिशन, लेट्स गो। मेरे लिए कंफर्ट, इसको चाहिए बचत, इसके लिए स्पीड। इन ड्राइव, राइड्स ऐसे जैसे आप चाहे। चाय बने बस दानेदार, चाय बने बस दानेदार। हम न्यूज़, आगे की सोच। पंजाब दी जा लाहौरे, मेरा सोना शहर लाहौरे, लाहौर दी वखरी टोरे, मेरा सोना शहर लाहौरे। ओ पक्कियां सड़कां ते गलियां दा विछया जाले, रोशन रावां ते हर एक नूं पानी साफ मिले। ए खिदमत दी रोशन मिसाले, मरियम नवाज दा दौरे, मेरा सोना शहर लाहौरे, पंजाब दी जान लाहौरे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जिंदा दिलाने लाहौर के लिए बड़ा तोहफा। लाहौर की तारीख में पहली बार 137 अरब रुपए की लागत से लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज, जिसके तहत लाहौर शहर में 85,000 से जायद स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब, 728 किलोमीटर तवील 6,506 गलियों की तामीर पुख्तगी, 76 किलोमीटर तवील 269 सड़कों की मरम्मत, 39 ट्यूबवेल्स की तंसीब और 319 किलोमीटर तवील वाटर सप्लाई लाइन्स का जार, 10 डिस्पोजेबल स्टेशन की तामीर और 316 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन्स बिछाई जा रही है। आइंदा माली साल में पंजाब के तमाम अजला में पंजाब पैकेज के तहत इसी तर्ज के तरक्याती मंसूबों पर काम का आगाज किया जा रहा है। मरियम नवाज का है दौर, बदल रहा है लाहौर। हुकूमत पंजाब। जब दांत मजबूत नहीं तो फ्रेशनेस किस काम की। नया मेडिकैम अल्ट्रा फ्रेश जेल, जिसका 3-in-1 ब्लास्टिंग जेल बनाए स्ट्रॉन्ग दांत फ्रेशनेस के साथ। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर सूबे के 13 पसमानदा अजला में आगोश प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के आगोश प्रोग्राम के तहत माँ और बच्चे की सेहत को यकीनी बनाने के लिए माओं को 23,000 रुपए तक की माली मुआवनत दी जा रही है। असा बहुत गरीब बंदे हैं, थोड़े वाल में को हमल थे, मैं को दूजा महीना है साड़ी हस्पताल दे विच एक आगोश प्रोग्राम चलिया पे। मैं शुक्रगुजार हाँ आगोश वालें उन्हें बहुत सारा सारे नाल ताउन कीते। याद रखें, प्रोग्राम के तहत दौरान हमल तिब्बी मुआयने, मरकज़ सेहत बच्चे की पैदाइश, यूनियन काउंसिल में पैदाइश का इंदराज और बच्चों को शेड्यूल के मुताबिक हिफाजती टीके लगवाने पर मरहलावार माली मुआवनत फराहम की जा रही है। लिहाजा वो रजिस्टर्ड खवातीन जिन्होंने मरकज़ सेहत पर मुकर्ररा मुआयने के बावजूद अभी तक अपने अकाउंट से रकम नहीं निकलवाई, वो फौरन करीबी कैश एजेंट से बगैर किसी कटौती के अपनी रकम हासिल करें। माँ और बच्चे की सेहत, महफूज मुस्तकबिल की जमानत। Try the all-new Wheat Pure. It smells amazing. Contains cucumber, aloe vera, and shea butter extracts or hair dermatologically tested to give smooth and moisturized glowing skin. Choose pure. Choose Wheat Pure. वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के साथ इस साल तकरीबन $4 बिलियन से भी बढ़ जाने वाली IT एक्सपोर्ट्स, 26,000 से ज्यादा टेक कंपनीज और लाखों ज़हीन दिमागों की क़यादत में हम तैयार हैं। शुरू होने वाला है डिजिटल सरमायाकारी का एक नया बाब और दुनिया भर से 45 से जायद अक़वाम के नुमाइंदे आ रहे हैं इस्लामाबाद। मसनूई जहानत से क्लाउड टेक्नोलॉजी तक जिद्दत भरे मुस्तकबिल का हाथ है अब हमारे हाथ में, जिसके साथ हम बढ़ेंगे आगे से आगे। इस्लामाबाद है अब डेवोस ऑफ डिजिटल FDI, डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम 2025, टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान। इन्वेस्ट, इनोवेट, थ्राइव। अब होगा सबका शुमार। PSER हुकूमत पंजाब के रमजान निगहबान पैकेज 2025 के तहत सूबाई सतह पर पहली बार PSER के मुस्तनद और दुरुस्त डाटा की बुनियाद पर 30 लाख घरानों की तारीख साज कामयाब माली मावनत के बाद अब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर
जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग मुस्तनद डाटा के जरिए तरक्याती इक़दामात की मौसर मनसूबाबंदी, मुस्तहिक घरानों की समाजी और माशी बहबूद और जमीनी हकायक पर मबनी फैसला साजी के लिए घर घर आकर सर्वे किया जा रहा है। शहरियों से अपील है कि PSER की टीमों से मुकम्मल ताउन करें और सर्वे को कामयाब बनाएं। याद रखें, हुकूमत पंजाब के तमाम फलाही मंसूबों से मुस्तफीद होने के लिए खानदान के हर फर्द का PSER में इंदराज लाजमी है। अपना और तमाम अहले खाना का असल कौमी शनाख्ती कार्ड और बच्चों का बेफॉर्म घर पर तैयार रखें। अहलियाने इलाका को PSER सर्वे के लिए आने वाली टीमों के बारे में पेशगी इत्तला दी जाएगी। ये सर्वे हुकूमत पंजाब की जानिब से बगैर किसी फीस के किया जा रहा है। पंजाब सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, हुकूमत पंजाब। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वक्त गुजरने के साथ हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। दोस्त ममालिक चाहते हैं जंग की सूरत हाल ना बने। बड़ी ताकतें सालिसी का किरदार अदा कर रही हैं। दुआ है कि भारत को कुछ अक्ल आए। पाकिस्तान की तरफ से जंग का आगाज नहीं होगा। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर रद्द अमल देंगे। भारत जितनी ताकत इस्तेमाल करेगा उससे ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत की जानिब से आलमी तहकीकात का जवाब ना देने का मतलब है कि दाल में कुछ काला है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ लेकर भारत ने खित्ते में कशीदगी फैलाई, जिसे कम कराने आलमी मुतहर्रिक हो गए। अमेरिका, रूस, चीन, सऊदी अरब और बरतानिया ने कशीदगी कम करने पर जोर दिया है। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमेरिका समेत रूस, चीन, सऊदी अरब और बरतानिया भी मैदान में आ गए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक पाक भारत कशीदगी पर ट्रंप इंतजामिया राब्ते में है। वजीर खारजा मार्को रूबियो दोनों ममालिक के वज़राए खारजा से राब्ता करेंगे। रूस ने भारत को पुरअमन रहने पर जोर दिया। रूस में पाकिस्तानी सफीर खालिद जमील ने रूस के डिप्टी वजीर खारजा से मुलाकात की। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी समेत दीगर अमूर पर बातचीत हुई। चीन ने भी भारत को कशीदगी कम करने का कहा। चीन ने अपने बयान में कहा, सूरत हाल पर तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। सऊदी अरब ने भी भारत और पाकिस्तान में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश किया। सऊदी वजारत खारजा का कहना है, दोनों ममालिक कशीदगी में कमी और मजीद बिगाड़ से गुरेज करें। तनाज़ात को सफारती जराए से हल किया जाए। बरतानवी हुकूमत का कहना है, कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करना पाकिस्तान और भारत दोनों की जिम्मेदारी है। नायब वजीर आजम इशाक डार ने सिफारती राबते तेज कर दिए। अमरीकी नाज़िम अल-उमूर नेटली बेकर से मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल से गुफ्तगू की। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के आज़म का अयादा किया। स्पेन और अम्मान के वज़राए ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबते किए। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी, गैर कानूनी इक़दामात और सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर अपनी तशवीश का इजहार किया। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर सूबे के 13 पसमानदा अजला में आगोश प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के आगोश प्रोग्राम के तहत माँ और बच्चे की सेहत को यकीनी बनाने के लिए माओं को 23,000 रुपए तक की माली मुआवनत दी जा रही है। असा बहुत गरीब बंदे हैं, थोड़े वाल मैं को हमल थे, मैं को दूजा महीना है साडे हस्पताल दे विच एक आगोश प्रोग्राम चलिया पे। मैं शुक्रगुजार हाँ आगोश वालें उन्हें बहुत सारा सारे नाल तामुन कीते। याद रखें, प्रोग्राम के तहत दौराने हमल तिब्बी मुआयने, मरकज़ सेहत बच्चे की पैदाइश, यूनियन काउंसिल में पैदाइश का इंदराज और बच्चों को शेड्यूल के मुताबिक हिफाजती टीके लगवाने पर मरहलावार माली मुआवनत फराहम की जा रही है। लिहाजा वो रजिस्टर्ड खवातीन जिन्होंने मरकज़ सेहत पर मुकर्ररा मुआयने के बावजूद अभी तक अपने अकाउंट से रकम नहीं निकलवाई, वो फौरन करीबी जाज कैश एजेंट से बगैर किसी कटौती के अपनी रकम हासिल करें। माँ और बच्चे की सेहत, महफूज मुस्तकबिल की जमानत। जब दांत मजबूत नहीं तो फ्रेशनेस किस काम की। नया मेडिकैम अल्ट्रा फ्रेश जेल, जिसका 3-in-1 ब्लास्टिंग जेल बनाए स्ट्रॉन्ग दांत फ्रेशनेस के साथ। तू कादर व आदल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। वो मेहनत कश, चाहे वो देका में, चाहे वो अपना शदीद गर्मी में देखती हुई भट्टी में, फैक्ट्रियों में, प्लांट्स में जो काम करता है दिन रात और बेपनाह खतरात मोल लेकर शबाना रोज मेहनत करता है, वो असल में हमारे हीरोज हैं। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ।